Hello, my dear friend. Today we are going to understand how to write the questions in your PSM Prof exams in such a way that you get maximum number, and in this session you will retain everything also. Because in my personal experience I have seen that many colleges, they try to fail students more, especially private colleges, some of them, because they fail and then they earn money through that failure of the student, है ना? So they fail almost 70-80 students also sometime. And PSM is the subject in third prof where your chances of failing can be maximum if you do not understand it with fun and interesting story. So in this session, first we will discuss the 7 question which, out of, if question will come on epidemiological studies, out of these 7 there is very high chance that the question will be there, and if epidemiological study questions are there, 99% chance that it will be out of these 7. The first question they can ask is define epidemiology and classify different types of study done in it. Then second they can ask is what is the difference between cohort and case control study. Very common question. If college want you to pass, then they will ask difference between cohort, case control. Then enumerate different steps of cohort, case control and RCT. That is, in a way, will give you overview of all these 3 study and what are the various steps you have to write in the exam, you will understand. Then the fourth question we will discuss is, this is the question which they will create if they want you to get low score, है ना? Difference between direct and indirect standardization. Then Framingham Hurt study, short notes on Framingham Hurt study is again very commonly asked, and the students who have read it or at least listen the story only, then they can answer. Then the explain the cohort study in detail with example and its various parameters like relative risk, AR, PAR. That is again a very common question. And the 7th, same way they can ask about the case control study and explain its how we calculate the odds ratio in it with an example. So we will discuss all the 7 questions, and I hope you will do very good in your exam. So let's first discuss how to write the definition of epidemiology, because I remember this is something which the examiner want to see in your copy, the exact lines of the definition from Park. And definition is so big, but it is actually very simple. See, to make you understand it better, you have to just focus on the keyword. The first keyword is epidemiology is the study of distribution, and second keyword is determinants and distribution. So basically, distribution means who get affected, in which part of country the case occurred, whether it occurred in adult or children, in which time it occurred. These are the distribution, है ना? Where, where it occurred and when it occurred, time, place, person. This detail is given in distribution. Determinants means how and why, है ना? So distribution basically is telling the story, and determinants is working like a spy, trying to find why the disease occur only in this population, only in this area. Like for example, we know Nipah outbreak occur in Kerala. So with that Nipah outbreak example, we can understand when does it occur and distribute, and why it occur in Kerala only, what are the factors which lead to its occurrence. So based on this 2 words, you can create this definition. The definition is epidemiology is the study of distribution and determinants of disease and health related behavior. And whenever we do a study, the knowledge which we get from it, we also have to know how to apply this knowledge for improvement of human health. So if you remember this 2 word, distribution, determinants, you will use it in the definition that epidemiology is the study of distribution and determinants of health related event or health condition of the people. And then second point, right, use of this knowledge to improve the health status of the community and the person. So this will complete the definition, but let's go in the exact word which will give you the distinction marks also. A study of the occurrence of distribution of health related event, states, processes in a specific population. So we have to focus on not just the distribution, but also the population in which it occur. Like I was giving the example of Kerala population, why Nipah occur in Kerala, then how it occur, the process, and then we also include a study of determinants
influencing this health event, means how and why it occurred, and then application of this knowledge to control this health event or to improve the health condition. So it's very simple. Remember, epidemiology is the study of distribution of the health related event, states, process, or in a specific population. And then it is also the study of determinants which tell how the health related event is getting influenced by various factors, and application of this knowledge to control this health related event. This is the complete definition. I hope you can write it well, very easily, if you know this two word distribution determinants. Let's see. This is the short way to remember the definition point. First, you will remember the word distribution, and then you will remember the word determinants, and then you will fill it with SP, 2 times SP. So distribution determinants, in between superintendent of police. What is first SP? States and processes. So study of occurrence of distribution of health related event. Of course, we will read only about health in medicine. So distribution of health related event. SP is states and process, and second SP is in a specified population, like for example Kerala population, and it includes the study of determinants influencing such process, how and why it occur, and the application of this knowledge to control related health problem. So there is two part of the definition. Actually, there is three part of epidemiology definition, and not only in theory, in Viva they asked it. I remember in my main Viva they asked epidemiology definition, and I was like, sir, can I define it in my way? I don't know the book definition. So they luckily allowed me, but usually they get very offended that can't you remember even a simple definition. So this is a very basic of passing Viva also, and they very frequently ask an exam. Let's finally revise this definition. If you write it, the impression will be that you are a very sincere student. So write it, try to write it in the way of Park. First you will write distribution, then first SP is states and process, how it occur and what is the process of its occurrence. And second SP is in which specified population it is occurring. And then after distribution part, and then SP states, process and specified population, we have to remember the second part, that is determinants which influence such process. Study of determinants means factor which influence such process. Then the third part is use of this knowledge, application of this knowledge to control related health problem. So that's how we define epidemiology. With three-part division, you can easily remember it and define it. Now, let's understand this distribution determinants in detail. As I was saying, distribution means time, place, person, and determinants means how and why of disease. So I was giving you the example of Nipah. If you will explain it with example, that will show that your concept is crystal clear. So in the example, let's talk about Nipah. In Nipah, which is the time when Nipah occur in Kerala? It occurs during rainy, post-rainy season, July to September. And then what is the place which occur? It occur only in coastal areas. Before Kerala, it has occurred in Bangladesh, it has occurred in Thailand, all were coastal area where it occur. And then person who will be affected, anyone is affected. But there is two definition in epidemiology, index case and primary case. Index case is first reported case, and like for corona, the first reported case in India was from Kerala on 31st December 2019. So index case is the first reported case. Now to explain this index primary better, just a simple story is that there was a teacher of preventive social medicine, name was Dr. Ashwani Sir. He was taking classes in China in 2019 December. And then on 24th of December, this is a real story, I came back to India. When I came back to India, at that time, they were using some infrared rays. And if I have fever and I pass through that screen, which is capturing the infrared rays, then due to fever, the screen will glow red. Luckily, when I pass through the screen at Delhi airport, it does not glow red. Now, this is the time of 2019 December. So at that time, RT-PCR was not there. So it does not turn red and I was allowed to go. The next day I have a class in Kerala. And I asked my brother to bring the cloths, I exchanged it, and then I took the flight and went to Kerala. And in Kerala, I took the class in a foreign medical graduate student batch. And in that batch, there was that student who was first reported case. So that Kerala student was the index case.
But in this story, who is the primary case? Maybe I was the primary case. Primary case is the first case, reported or not reported. है ना? So I'm just saying that maybe I am the reason for spreading the initial cases of COVID in India. Maybe I am the Thanos for India. Na? You can see my face is also like that. Na? Should I blow it or what? So I hope you understand index and primary. They can ask separate question on definition of index and primary. If they would have caught me at Delhi airport, then I will become primary plus index both. But because they did not caught me, primary was me and index was that Kerala student. So now let's come back to the point what I was saying. Ki distribution is time, place, person. Now we know it occur in coastal areas, rainy post-rainy season, and anyone can be affected. But mostly farmers, those who climb on the date palm tree and drink that tree, those people who are dealing with pigs, they are the people who are the first affected person of this Nipah virus epidemic. Then let's talk about the determinants, which is the detective, searching how and why of disease. So why this Nipah occur only in rainy post-rainy season? The reason is that we are now reading determinants, how and why. So the reason why Nipah mostly occur in rainy post-rainy season is because rainy post-rainy season is the breeding time for fruit bat. So this is the time when fruit bat have breeding, and during breeding they like to drink date palm sap more. Okay, and then through this date palm, what happen is fruit bat is infected with Nipah virus. Fruit bat is the origin of Nipah virus, and this fruit bat is drinking this date palm sap. You know what is date palm sap? Date palm sap is known as tadi in UP Bihar and is known as kal in Kerala and all the southern part of India, Tamil Nadu and all. You might have, it's natural fruit drink, but if you ferment it, it will give you flavor of alcohol also, like beer and all. And many times it's culturally drink in many populations. It's like healthy fresh fruit juice. Okay, I have also tried it once. So the point, it's good. So the point is key, the origin of Nipah is fruit bat, and during breeding they are drinking more date palm sap. Anyway, they drink date palm sap, so their Nipah virus go to date palm sap. Okay, and this date palm sap is something which human drink, and then we suffer from this Nipah virus infection. Second is that this fruit bat, it bite pig, and then if human eat pig or human come in contact with pig, then human can also develop it. And fruit bat sometime bite pig, sometime fruit bat eat fruit, and that half eaten fruit with saliva of fruit bat and all is eaten by pig. So pig get infected and then it can come to human. So why Nipah occur only in coastal area? Because in coastal area date palm sap is more. Second thing is, in coastal area the temperature is favorable for virus breeding. So that's why it occur in coastal area. Why rainy post-rainy season? Because this is the breeding season of fruit bat, and that is the time when they spread Nipah more. So we know the reason of time, place. We know the reason of why it occur in coastal areas more, and because it is affecting more those people who are dealing with pigs, or more those people who are taking the date palm sap or drinking it regularly. So that's why they affect these two people more. And I hope you understand how and why Nipah transmit. And this is the main purpose of epidemiology. If you write this in the prof exam paper, the purpose of epidemiology, then PSM teacher will be highly impressed. The purpose of epidemiology, remember, to close the tap, to prevent the cases from occurring. Because you can write it in detail, because medicine people, surgery people, they treat the cases, which is important to treat. But main thing is, if the water is flowing from a tap and you are just wiping the floor, it will never solve the problem. So medicine and surgery people are helping those who are in need. They are wiping the floor.
and PSM people or epidemiologists mainly, they are trying to find how Nipah occur, why Nipah occur, and then they try to control it. Like when you know how Nipah occur, why Nipah occur, then the Kerala government released this advisory to people that in the rainy post-rainy season, avoid drinking date palm sap. In the rainy post-rainy season, avoid eating pig or coming in contacts with pig. So, and they know that this is the time they have to be in high alert. So if they are in high alert, they can anyway control epidemic early. So this is the purpose of epidemiology. Now you can control Nipah from occurring because you understand how to close the tap. So you write this 4 point in epidemiology definitions and you will get full mark. And first point is epidemiology is study of distribution of states and processes in a specific population, and it's also a study of determinants of health related event and use of this knowledge to control that health related event in the population. That was the definition you have to remember. Second point you have to remember is in distribution we have time, place, person, and in determinants we have how and why. So you will explain the Nipah thing with example in that. Third point you have to remember and write ki how with use of epidemiology we can control Nipah virus. Why epidemiology is more important than clinical subjects, because it is controlling the disease from the root cause. It is closing the tap. And if you give the example of closing the tap, you will get very high number also, because it will satisfy the ego of PSM teachers. Then fourth thing which we read here was what is the difference of index case, primary case. You can also write that to elaborate this question. Chalo, now this question, first question is done. Ki what is epidemiology? Define epidemiology. But then they can ask something more about the various type of epidemiological study. They can ask you to classify the various type of epidemiological study. So the classification is very simple to understand. This studies can be of two type. First type of epidemiological study is when you do something from your side, when you give some new medicine, new treatment. These are known as interventional study, when you do something from your side. And second type of study is observational study. ऑब्जर्वेशनल स्टडी को कहते हैं धृतराष्ट्र स्टडी. धृतराष्ट्र आपको पता ही है, महाभारत का एक कैरेक्टर था, अंधा था और वो बस पूछते रहता था ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, करता कुछ भी नहीं था घंटा, लेकिन पूछते रहता था. तो उसी तरह से ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम करते कुछ नहीं है, बस ऑब्जर्व करते हैं, पूछते रहते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है. और इंटरवेंशन में हम कुछ करते हैं. What I was saying in Hindi was observational study can be a Dhritarashtra study, which was the character in Mahabharata, blind character, who don't used to interfere, just used to keep asking what is happening, what is happening. So similarly in observation, we just ask, we don't intervene. Here we intervene. Now when you observational. When you observe any story or event, two things can happen. First thing is you can describe the situation. This is known as descriptive study. When the purpose is to describe, we do descriptive study. And descriptive study is done to generate hypothesis. Study which you did on me. And suppose I become successful and in 6 months, my weight, which is now 95 kg, became 80 kg. 15 kg I lost in 6 months. I hope it will occur. So now you will repeat this study on group of patient and we call it case series. And I'm actually going to do this study. Being you, my doctor, I will definitely continue it. So case series is when you are doing hospital study, but this time the hospital study is not on one patient, but it is on one or more than one group of patient. But the main thing is this more than one or one group of patient should have common illness. They all should have obesity and they all are going through meditation treatment, not necessarily meditation treatment, but they all have the same disease, and you are observing the group of patients, how they are improving and all. That will be case series. Okay. So sometimes they can ask you to write short note on case study, case series also. And with this meditation example, you can write it. You can have other example also. Let's say you are a surgeon and one night you are in the OT, a case of penis fracture, penile fracture came to you. So first you ask, what were you doing, how your penis gets fractured?
then you write the Doppler and other investigation, then you did the repair surgery, and then finally you said ki go slow, है ना? And you release the patient and found that okay, erection is now occurring normally. So this is case study. And suppose after doing this, you published your article in Nature Journal, and now you are a famous penis repair surgeon, and you are being invited in Delhi to repair three such cases, and in Dubai to repair two more such cases. Al Habibi. So if you are doing it on Delhi and Dubai, two group of population are there, but they all have penis fracture, common disease, and you write the whole hospital story of this whole two group of patient, then you will call it case series. So these are first two type of descriptive study. The third type of descriptive study is cross-sectional study. You can also get a short note on cross-sectional study. And what we do in cross-sectional study is, it's basically cross-sectional study or cross-sectional survey. Many time we try to gather the data from the whole school, from the whole college, from the whole community at present moment. That is cross-sectional study. So in cross-sectional study, what we do, simply question are asked or data is collected from everyone about present moment. So do remember that in cross-sectional study, we are asking question from every person, every participant about which thing? About present moment only. We are not going in past, because if we go in past, it will become case control study. We are not going in future, because if we go in future, it will become cohort and RCT. We are just focusing at present moment, that how many people are having illness. Like let's say, suppose I came to your class and I asked how many of you have, uh, how many of you are using dating app in your phone, and suppose 5% students said yes, I am using dating app on my phone, Tinder or Bumble or something. So this 5% people have this dating app in their phone at present moment, है ना? This is not that they had dating app earlier or not. They should have it in their present moment time. And because we are doing cross-sectional study at present moment, so we will be able to find prevalence. That is why the other name of cross-sectional study is prevalence study. And we also call it as a snapshot study. Tell me, can you take a picture in past or future? Never. We can only take picture in present moment. So similarly here in a snapshot study, we ask question about present moment. Do you have Tinder app, Bumble app or any dating app in your phone right now or not? And when I asked this question, how many people said yes? 5 people said yes out of 100. So this 5 is the prevalence. What is prevalence? Prevalence simply means total case. Old plus new case is prevalence. This is a separate topic. They can sometime ask this prevalence and incidence topic also. But try to understand what is prevalence. Very simple. Old plus new case at present moment. What does it mean? That means you will be counted in the prevalence of dating app user. Okay. Oh yeah. Oh, oh, am I audible properly? Oh, class live. Pause.
Hello, my dear friend. I'm really sorry for this inconvenience. There is some technical error from my side. Kindly forgive me. हेलो माय डियर फ्रेंड्स. कोई ज्वाइन उसका अच्छा उसमें ग्रुप में हम लोग में थे ना. हेलो माय डियर फ्रेंड्स. हेलो. बैठ जाऊँ मैं. 280 तक तो मैं लेके गया हूँ. उससे पे एक हल्का सा 1 सेकंड एक मतलब थोड़ा सा ही गैप रह गया था और 300 310 के साथ हो जाएगा. ये लाइव सेशन में कंटिन्यू करूँ मैं. उसके बाद तो अभी ये जैसे ये देखो ना, जैसे सर बोल रहे हैं ना, ये तो सेट हो जाएगा. जैसे सर भी बोल रहे हैं ना, वो पीएस पे लाएगा. हाँ, जैसे ये देखो, जैसे भी सर बोलेंगे ना, लिपसिंग पहले आ. हेलो, कैसे हो आप? उसके बाद साउंड का वो दिखा. आई एम सॉरी फॉर दिस side effects. The technical error is from my side. Kindly forgive me for that. क्यों हुआ? मेरे बम से चेंज हो रहा है. स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप स्ट्रीमिंग, स्टॉप करो. एक बार ओबीएस ऑफ करके ऑन करके देख लूं. Last thing we were discussing was cross-sectional study. So in the cross-sectional study, as I said, you will ask questions from every participant about present moment. And if suppose I am asking how many of you are having dating app right now in your phone, and 5 people said yes out of 100. So 5 is the prevalence of using dating app. Prevalence means old plus new case at present moment. Maybe some of you are using dating app for last 3-4 years. Some of you downloaded it today morning only. You felt like it and you downloaded. So if you downloaded today morning, you are new case. If you have it in your phone for 4 years, you are old case. But you should have it in your phone right now. If you have deleted it, if you are recovered, then it will not be counted in prevalence. You can also explain it with one more clinical example. That suppose I want to know how many of you are practicing meditation or are doing exercise in the class. How many are students are doing exercise for 1 hour on 3-4 days in a week. So if 5 students are doing exercise, 5 will be the prevalence of doing exercise. And this cross-sectional study is also known as KAP study. So sometimes they give you a small short notes on KAP study. All the kind of survey, all kind of KAP study or cross-sectional study. So what do you mean by KAP study? KAP means knowledge attitude practice study. Okay. So let's continue the example of our meditation study so that we can understand and explain all the topics, all the different study with the same example. In case of meditation, I will come to the class and I will ask how many of you are doing meditation 3-4 days in a week for 2-3 minutes also. So suppose 5 people said yes out of 100. 5 will become the prevalence of student who are doing meditation. So this doing meditation is the practice. Practice 5 students are doing out of 100. Then first thing I can ask, other question I can ask from them is, do you know about meditation? What do you know about meditation? So they will not all suppose know about it or want to talk about it. Suppose 90 said yes, I have heard, but I don't know much about it. And 10 said yes, I know, but I have not know much about it.
90 said, yes, I know it is focusing on breathe so that you can observe your thoughts separately. And so they have some basic knowledge. That is the knowledge study. You can ask such question on that. After knowing the knowledge, you will ask attitude. What do you think about doing meditation? So suppose in this case, 50 people said, uh, we think it is very boring thing, and it is not my cup of tea, we cannot do it. And 50 people said that we should try doing it. So this is the attitude towards meditation. And in the practice, only 5 are doing out of 100. So this type of study is cross-sectional study, because in this KP study, we are asking question from everyone about present moment knowledge, present moment attitude, present moment practice. And question is from everyone. Second example of cross-sectional study is Monica project. They can ask you a short note on that also. Monica project is the full form. They can ask, they have asked also, monitoring trend and determinant of cardiovascular disease. So this name Monica must be named by some Turkey lusty researcher, because how they made this name Monica, they took Mo from monitoring and Moni from monitoring, and they took Ka from cardiovascular disease, and they made it Monica. But the full form is monitoring trend and determinant of cardiovascular disease. And what we do in this study, Monica study, we ask very large population that do you drink alcohol, do you smoke cigarette, do you do exercise, are you under stress? We ask everything about the risk factor. And after asking about risk factor, we ask that what is your present blood sugar, what is your present BP, or we measured it also in the population. So whenever we do any health survey in population, whenever we ask question regarding their health behavior, risk factor, and we also measure their BP, sugar and all, these will always be example of cross-sectional study. All health survey, Monica project, KP study, they are example of cross-sectional study. So if in exam they ask about cross-sectional study, you can first write this point that we are asking the question from every participant about present moment prevalence. We are asking question about present moment prevalence and its associated factor. For example, suppose you are asking about cough and cold, that how many of you have cough and cold right now? And suppose 10 people said yes, 8 had it from previous day, 2 developed it today, old plus new, total 10 cases had cough and cold. So after knowing that 10 is the prevalence of cough and cold out of 100, I will ask, did you eat ice cream in last 3 days or not? Did you went to some cold place in last 3 days or not? So we will ask the associated factor also, and we will try to find out why cough and cold occur in some people and not in other people. But we are asking question only about present moment, in past much, not going in future much, just present moment. Ki, are you eating ice cream this day? Are you smoking cigarette this day? Have you traveled somewhere this day? So we are taking present moment data. This is cross-sectional. But the problem in cross-sectional study is there is one bias in cross-sectional study known as apprehension bias. See, when I ask this question, usually I ask the same question in all the batches where I teach. And when I ask, do you use Tinder or dating app? Usually, actually, less than 5 people out of 100 raise their hand. But it doesn't mean only 5 people use dating app. Dating app are used by many more students than 5. But why only 5 are raising it? Because other 95, some of them are using it, but they are also thinking that if I raised hand, what other people will think about me? So apprehension bias simply means that response or behavior of participant changes when they start thinking about other people. Response of behavior changes when participant think about interviewer opinion or other people opinion. Think about other.
other or researcher opinion, है ना? And a very good example of this is white apron hypertension. As soon as the patient saw doctor in white apron, the BP of patient rises. Not because the doctor is hot. Doctor can be hot, but BP is rising because now the patient is thinking, I don't know where the doctor will put his finger in my body or which disease will come out. So because of apprehension, their BP is rising. Similarly, because of apprehension, only 5 people are raising hand for dating app when actually more people are using it. So this is cross-sectional study, which is the third type of descriptive study. Case study, case series, descriptive, and cross-sectional is the third type. Then the fourth type of descriptive study is known as ecological study. And they can ask you a separate short notes on ecological study also. In ecological study, what we do is we never ask questions from participant. No question or data from participant. So if they ask you to differentiate between cross-sectional and ecological, this is the main difference. In cross-sectional, we ask it from everyone. Here, we don't ask it from anyone. Second point is, in ecological study, what we do, hospital data is correlated with population data. Okay, correlated with population data. So this will be ecological study. Let's give a fresh example, which I was just thinking while writing this point here. The example is that in a international journal, this report came that cases of depression are least in Tibet hospitals. Tibet, I hope you all know, is a very beautiful country in the lap of Himalayan region. And according to international survey, Tibet is considered to be one of the most happy country. In that country, people complain the least in spite of having all those hardships and China again and again trying to capture them and all those things. They still are being considered as the most happy country. And the cases of depression are least in Tibet hospital because most population are practicing meditation, are Buddhist, and because they are Buddhist, they are practicing meditation daily. So because they practice meditation daily, that's why their depression is less. That's not I am saying, that suppose a study published in a journal said. So in this example, you can see the cases of depression, they are hospital data. Okay, and population is Buddhist, population is doing meditation. This is population data. So what we did, we took hospital data of depression and compared it with population data of being Buddhism and doing meditation. So we are correlating hospital and population data. That is why ecological study is known as correlational study, because we correlate these two things. So if you write these two names and you explain this example, you will get the good marks. But if you write one final punch, that what is the problem in ecological study, that is ecological fallacy, then you will get definitely the full mark in this question. What is ecological fallacy? It simply means result of ecological study which we have done on population cannot be applied on individual. Result of ecological study done on population can't be applied on individual. So because if you apply it on individual, it will not be correct. Can't be applied on individual or can't be correct for individual. For example, when I said that cases of depression is less in Tibet because meditation population is more, is it that everyone in Tibet is doing meditation? Is it that everyone is practicing medicine? No, it is not correct for everyone. And not everyone is practicing meditation. So whenever we say something about the whole population, it's not correct when applied on every individual.
For example, let's take one more example, which you can write in the study in the exam also. Key cases of breast cancer increased in America with increase in fatty diet. So fatty diet or more restaurants of McD, KFC, Domino's and all has opened. So breast cancer has increased. That was the headline of a newspaper in America. So in this example, breast cancer cases are hospital data. Fatty diet has increased. KFC, McD, Domino's has increased. This is population data. And they are correlating it. So this is ecological study. But does it mean that all the female in America who develop breast cancer developed it due to fatty diet? No, no, it's not correct when applied on every individual of breast cancer in America, because many female they developed it due to smoking, many developed it due to genetic factor. So we cannot say that everyone is developing due to fatty diet. Similarly, here in meditation study, we cannot say that everyone is not depressed or happy due to meditation also. Maybe there are other reasons also. Maybe the survey done was faulty. Maybe the survey was done under a king, and king want the data to come out happy to promote tourism. So what, and maybe the individuals are not, it is not correct for every individual. So this is the problem of ecological study. It just correlate things weakly, and we cannot be 100% sure that everyone is having the same factor. So it's not correct when applied on individual. So these are the 4 study which are descriptive study. I hope you will remember cross-sectional, ecological also. And if asked in exam, you can write the short notes on case study, case series also. These are descriptive. Now, under observational study, remember, one part is descriptive, other part is analytic. And in the analytical study, there are actually 4 study. One is case control, about which we will read in detail. Other is cohort, about which also we will read in detail. The third is cross-sectional and ecological. So cross-sectional and ecological are 2 study which in Park they have written in both category, descriptive also, analytic also. Why? Because cross-sectional ecological, sometimes they have only story, just describing the condition. Sometimes cross-sectional ecological also have data. So they can also analyze the theory, hypothesis, whether it is correct or not. So that's why it can be analytic both. But core descriptive study are case study, case series. Core analytic study are case control, cohort. And interventional study example is randomized control trial, RCT. So this way you can write the classification after definition, and this way you can write short notes on case study, case series, short notes on cross-sectional study, short note on KAP study with example of this meditation thing, short notes on the bias or problem in cross-sectional study, apprehension bias. Then you also learned how to write the short notes on ecological study and how it is different from cross-sectional. In ecological, unit of study is population. We never ask question from individual. But in cross-sectional, the unit of study is individual participant. So this is first difference. Second difference, in ecological, we are correlating hospital and population data. And in cross-sectional, we are asking question from every participant about present moment and their associated risk factors. So this is the 2 major difference. And then the third difference is their fallacy. Cross-sectional will have apprehension bias, ecological will have ecological fallacy. So in this way, you can differentiate also. Now, let's come and discuss one more short notes which can come topic. They can ask you about, write down about time distribution, or if not, sometime epidemiology definition question can come in big 20 number. So in that case, you have to talk about distribution and determinants in detail. And time, place, person, these 3 things are distribution. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीधी सीधी बात है फैलाव, कैसे बीमारी फैली, कहां फैली, किन में फैली, है ना. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द स्प्रेड, हाउ, इन विच पीपल इट इज स्प्रेड, in which time it is spread, in which region it is spread. So in the distribution, first thing we want to know which time the disease occur. And time distribution can be seasonal, cyclic, secular. Seasonal means repeating of disease due to weather condition. Example of seasonal trend can be, of course, flu, can be malaria, can be, you know, you might have seen the news that in foggy season,
on the Yamuna Expressway highway, one accident occurred by one car, and due to fog, 10 more car come and bang the first one. Like fuck, 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 fuck. There is 10 more car who is doing accident. So this is due to weather. So it is seasonal trend. Now what is cyclic trend? Cyclic trend, disease repeated, but not due to weather. For example, if you have uh, increased accident during Saturday night. So in Saturday night, they are drinking more and their inside weather is changing, but not outside weather. So the accident is occurring every week on Saturday night more. This is cyclic. Similarly, two more example of cyclic trend is every 7 to 10 year, pandemic of influenza virus occur, and before vaccination era time, every 3 to 5 year, measles epidemic used to occur again and again. So these were cyclic. And a very good example is in some Russian country, they take prof exam in winter. So prof exam in winter is cyclic or seasonal? Think and tell me. Prof exam in winter, seasonal or cyclic? Yes, it is cyclic, because they are not taking prof exam because of winter. They are taking it because 1 year has passed. It's not that professor come out in winter and say, baraf padne wali hai, let's play black black. They are not taking exam due to the ice is going to fall. They are taking it because 1 year is passed. So that is cyclic trend. Okay. Then what is secular trend? देखो, secular thing we use for leaders also. Ki this is secular, this is communal leader. So who is a secular leader? Who is equal to all religion for a very long period of time. है ना? Not just before election, but also after election. है ना? So secular trend means constant increase in cases or constant decrease over a long period of time. Just like secular leader remain constant to all religion for a long period of time. An example of secular trend is cardiovascular disease, hypertension, and diabetes. These diseases are constantly increasing in the world in last 50 years, and the death due to cardiovascular disease is constantly decreasing in UK population also. So if it is constantly increasing, decreasing, that is secular trend, and it is represented by this line diagram. So these are the three time distribution. I hope you will remember. Now let's understand the place and person affected thing. Place means how long area it is affecting and how many cases are occurring. So based on this, we can define endemic, epidemic, pandemic. And sometimes they ask the definition of epidemic separately, endemic, pandemic, epidemic definition separately also. So endemic means constant occurrence of disease in expected number. For example, Kala Azar is constantly occurring each year in fixed number in 4 states of India: Bihar, then the brother of Bihar, Jharkhand, neighbor UP, and West Bengal. 4 states only are constantly having Kala Azar cases, so they are endemic for Kala Azar. Then what is epidemic? There is two definition of epidemic. We will discuss it in the next page separately. But first learn what is pandemic. Pandemic means occurrence of cases. Okay, let me discuss this pandemic point. Pandemic means occurrence of large number of cases. Large number of cases in two or more countries of two or more WHO region. Cases should occur in two or more WHO region, only then we call it pandemic. And there are total 8 WHO region in the world. So I think you know that WHO was blamed. They declared corona pandemic very late because the cases in India was also started reported on 31st of December 2019. So cases started occurring in 2019. But when does WHO declared pandemic? On 11th March 2020. So why so late? People were putting this allegation on WHO. So then WHO said this, look, my dear friend, first COVID cases occurred in China, then it occurred in Taiwan, then it occurred to India. So there were 3 countries, but all these 3 countries are in Southeast Asia WHO region. So they are in the same WHO region. That's why we do not call it pandemic. But when cases occurred in Italy,
which lie in the Europe region of WHO, Europe WHO region. Now there are 2 WHO region affected, then we can call it pandemic. Okay, so if it is 2 or more country of 2 or more WHO region, then we call it pandemic. And please explain it with this corona example, which is very good example to understand this concept. Now let's discuss what is this epidemic, you know. And there are 2 definition of epidemic. Sometimes they directly ask this question, explain epidemic with example, or write down the definition of epidemic with example. So epidemic can be defined in 2 ways. First is cases much more than expected number. If cases are occurring much more than expected, we call it epidemic. So how will you decide that it is much more? Much more means more than 2 standard deviation than upper limit. Then we call it the cases are much more. For example, cases of dengue each year in Delhi is 4,000 to are 2,000 to 20,000, and each year in Delhi 2,000 to 20,000 cases occurred. So because each year 2,000 to 20,000 occurred, Delhi is endemic for dengue. Endemic means always some fixed number of cases will occur each year. That's why Delhi is endemic. But suppose in any year more than 2 standard deviation of 20,000 cases occur, then we call it epidemic. Let me explain. What is the standard deviation? It's not a big thing. It's very simple to understand. In 2,000, 11,000, 20,000, what is the mean or average? Mean is 11,000. How I found it without calculation? Because this is symmetrical distribution. देखो यहाँ पे हर एक नंबर बराबर दूरी पर है, और जब हर एक नंबर बराबर दूरी पर होता है तो बीच का ही नंबर मीन होता है. जैसे यहाँ पे 11,000 मीन है, और 11,000 यानी मीन से हर एक नंबर कितना दूर है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन. जैसे 2,000 11,000 से कितना दूर है? 2,000 11,000 से 9,000 दूर है. 20,000 11,000 से कितना दूर है? ये भी 9,000 दूर है. तो बीच के नंबर का हर एक नंबर से जो एवरेज दूरी है उसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं. यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन है 9,000, और जब हम 9,000 को 2 से इंटू करेंगे तो ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा, यानी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है 18,000. तो अगर किसी भी साल दिल्ली में केस 20,000 प्लस 18,000, 38,000 से ज्यादा केस हो गए तो हम उसको दिल्ली में डेंगू का एपिडेमिक आ गया है ऐसा कहेंगे. What I was explaining in Hindi was that because 2,000, 11,000, 20,000 are the number of cases, so in this distribution mean is 11,000. How can I found it without calculation? Because it is symmetrical distribution. Every number is equally away, and when every number is equally away, middle number become mean. So mean is 11,000. Now what is standard deviation? Standard deviation means how far is each number from the mean. Like how far is 2,000 from 11,000? 9,000. How far is 20,000 from 11,000? 9,000. So what is the standard deviation? 9,000. How far is each number from the middle number, from the mean? So here standard deviation is 9,000. And if you want to know 2 standard deviation, 9,000 into 2, it will come 18,000. Upper limit was 20,000 cases. That was normal expected. But suppose some year, suppose in 2026, 20,000 plus 2 standard deviation, 18,000. That means total 38,000, more than 38,000 cases occurred in Delhi of dengue. Then we call it epidemic of Delhi, dengue in epidemic. Then we will call epidemic of dengue in Delhi. So this is first definition, cases much more than 2 standard deviation of upper expected number. Cases much more than expected number, and how we found it is much more than expected number? If it is more than 2 standard deviation from upper limit, that means more than 38,000 cases, we will call it epidemic of dengue in Delhi. Second definition is occurrence of even a single case of such a disease which poses public health threat. एक भी केस ऐसा हो जाए जिससे सबकी फट जाए ना,
हालत टाइट हो जाए, पूरी सरकार हिल जाए, सबके मम्मी पापा का कॉल आने लग जाए, तो उसको हम एक केस होने पर भी इपिडेमिक कह देंगे. Even one case of such a disease which poses public health threat is also known as epidemic. So there are two definitions of epidemic. Let me give you this example. Suppose in 2026, one case of Ebola occur in Delhi. So that will be just one case, but we still call it as epidemic of Ebola in Delhi. And I still remember in 2015, this Ebola was occurring in Africa as a pandemic. Africa and some other South American country were also affected, and two cases were also in India. So there were two or more WHO region involved. So it was a pandemic. And my batchmate Safi Imran, which is just opposite to Imran Hasmi, was posted in that RML hospital anesthesia ward where Ebola patients were admitted. So at around 10:11, sometime in the afternoon nearby, he called me ki Ghode kahan hai? My pet name in Aligarh Muslim University was Ghoda, horsey. So he said, Ghode kahan hai? Horsey, where are you? So I said, kahin kuch nahi yaar, yahin AIMS mein ghas char raha hu main, because I was doing my PG from AIMS New Delhi at that time. So I just said I'm grazing grass here only. So then he said, come to Gotham City, which is behind AIMS. And when I reached there, I found that Safi Imran is very full of sweating, with one cigarette in his mouth and one packet of cigarette in his hand of mild regular cigarette. So I said, what happened to you, Safi? I can see that your bum is cracked by looking at your face only. Why you are in so much of tension? He said, bro, today I am posted in that Ebola ward where there is two Ebola patients from Africa are already present. And you know what is the case fatality rate of Ebola? I said, no, dear, I don't know what is the case fatality rate of Ebola. He said, case fatality rate of Ebola is 50 to 80%, minimum 50%. Minimum 50% means what is case fatality rate? We will learn this also very simply, that if Ebola cases are 2, number of case in the ward where Imran was working was 2 Ebola case. So out of 2, how many deaths occur due to Ebola? Death due to this specific disease about which we are talking. And then we multiply it with 100. So if Ebola have case fatality rate of 50%, it means out of 2 people, death will occur in 1 person, because 1 by 2 into 100 is 50%. Similarly, for rabies, what is the case fatality rate for rabies? For case fatality rate for rabies is 100%. That means if cases of rabies are 100, all 100 will die due to rabies. No one will survive. So that's why rabies is most lethal disease. And therefore, what does case fatality rate tell us? Case fatality rate tell us virulence or killing power. And this is a very common short notes on case fatality. Ki what is this? This is why it tells ki what is the killing power of disease. Like the rabies is the most lethal disease with most virulence. So when Safi told me that case fatality rate of Ebola is 50%, he also explained that 50% means out of 100 case, 50 will die. This is case fatality rate of Ebola. So it may be my last cigarette which I am smoking with you. That's why I am so tensed. And in next half an hour or so, before going to the duty, Imran smoked 8 of that cigarette, phaka, one after another. And I don't know why I also smoked 7, 8 cigarette with him, just to give him company and all. And I'm laughing and all on this story with you. But the sad real thing is that Imran is no more with me. Safi Imran is no more with me. Now he is in UK. He survived, did not die, saved by that cigarette. He's still alive and doing his post anesthesia jobs in UK and doing good, and he survived. But I hope you understand with this story that with that one case, the whole Delhi was under alert.
So that was one case, but still epidemic. Or more than two standard deviation than upper limit, that is also epidemic. So we can define epidemic from here, and we can define case fatality rate from here also. Now, after learning this thing, let's learn this point, that because the sometime asked write short notes on 3 types of epidemic also, separate question. So the first type of epidemic is point source epidemic, which is common source single exposure. बम फट जाए केसेस का, है ना? So suppose let's say suppose after attending this class you went to your hostel and you found 5-6 cases of chharchari is occurring in your hostel. Chharchari, you know na? No, the musical sound which come out when you have loose motion, that is chharchari. So you found 5-6 cases of loose motions are there in the hostel. Walls are painted in yellow, and you reach there as a doctor. So what is the first thing you will do as a doctor when you reach there? Can you tell me? The first thing you have to do is collect the sample and take it for diagnosis. Of course, not in your hand, it will leak out in some device. Because if the diagnosis came cholera, you need to be in high alert, vacate the hostel and give doxycycline as chemoprophylaxis to everyone. If it is typhoid, you need not to worry that much. Give ciprofloxacin twice a day for 7 to 10 days and all will be okay with the patients. And if it is gastroenteritis, you can give metronidazole 400 mg 3 times a day for 5 to 7 days and the patient will be okay. So the whole management depend on diagnosis. That's why the first thing we do is confirmation of diagnosis. Okay. In some other session, we will discuss in detail how to do outbreak investigation, because this is also a common question asked in your prof exam. But first focus, what is happening in this outbreak of loose motion in your hostel? One place somewhere they eat something which was not good. Maybe it was hostel mess food or maybe it was outside food. But the source was common, and suddenly uh, the cases started occurring too much. So this is point source common single exposure epidemic. And in point source single exposure epidemic, you can find such type of wave pattern. Cases start slowly, fall slowly. But the main thing is that the cases are occurring in less than one incubation period. What is incubation period? I hope you all know. Incubation period is the time gap between entry of pathogen and appearance of first symptom. मेरे अंदर कीड़ा घुसा और मेरा पहला खांसी आया, इसके बीच का गैप incubation period है. A virus entered in my body and I coughed first time after that. So that gap between entry and first symptom is incubation period. So if all cases are occurring in one incubation period like this, then you call it point source epidemic or common source single exposure epidemic. An example is not only food poisoning, but also Bhopal gas tragedy, Chernobyl gas tragedy. Then if it is common source continuous exposure means cases will rise quickly, but they will keep on fluctuating and they will fall quickly. But main thing in continuous is that the time taken is much more than one incubation period. Okay. The third and last type of epidemic is propagated epidemic, and propagated epidemic have secondary wave. Something ring your mind, secondary wave? Yes, corona. So propagated epidemic will be something like this. The cases will start quickly, they will reach to a plateau, and then after reaching the plateau they may fall, and then again secondary wave of cases will occur which will be very large than the primary wave. So this will be propagated epidemic. Example is corona, and not just corona, most of the respiratory transmitted diseases like SARS, MERS, flu, they all are also example of this propagated epidemic. So these are the 3 type of epidemic. I hope you can write the short notes on these 3 things also. So now let's come to the second question, because we have done with the first question. If you remember, what was the first question which we were discussing? Our first question of discussion was that define epidemiology and classify different type of epidemiological study. So along with doing this question, we did 6 more other question in that one question. First we defined epidemiology, then we classified the studies. But after classifying, we learned how to make short notes on primary case index case, how to make short notes on case study case series,
cross-sectional studies, ecological studies, endemic, epidemic, pandemic, time distribution of disease, seasonal, cyclic, and secular trend, and what are the different three types of epidemic. So total 7 questions we did in this one question. I hope this was useful. This session was useful. Now let's come to the second part. What is the difference between cohort and case control study? Let's read that in detail. So let's go there. The difference between them. See, I can go and discuss just one question also, but many a time they ask big question, many a time they ask to write short notes from various topic in that. So I just want you to be prepared with the whole topics of epidemiological concepts. Let's discuss this thing, the difference between case control and cohort. So I hope you know it already that in case control we go in past history and in cohort we go in future history. But still, if I will not explain it with example, and suppose you don't have good base, then how can you write the difference without understanding with example? So before going to this question of difference between case control and cohort, let's understand this case control and cohort through different examples. Because as I said, sometimes they ask that write the cohort study in detail and enumerate all its RR, AR, and PAR. And sometimes they write the sixth question, which we have to discuss here, is explain case control study with example and explain how we find odds ratio. So let's first understand what is the difference steps of doing case control cohort RCT. If you remember this page, any question on case control cohort RCT came, you can paste this page. And if you pasted this page, you can ensure that you are going to get half marks of the question just by writing this page. And this page is also important for all the students preparing for exams, because in these days, in exams also, they are asking what are the steps of case control cohort and RCT. So let's understand how we do case control first. In case control, we select cases and control. Cases are those people who have disease. Control are those people who don't have disease. Suppose in my study of your study of meditation, case are people like me, and we are the case obese people. Control are non-obese. Then you will do matching. Matching means you try to have similar people in the two group. Like for example, if you are doing a study on obesity and its cause, can you do it like this, that in the case you took professors like me, and control you took third prof MBBS student? If you will compare professor's reason of obesity with MBBS student, you will never be able to compare these two group. So matching means if in the case you are taking a professor as obese, control will also be a professor who is non-obese. If the case is a student of third prof who is obese, control will be a non-obese student of third prof only. So case controls should be similar in some variable. At least they should be similar in their age group. That if we are matching, we call it matching. Matching means similar people in some aspect we take in both the groups. So after selection, we do matching. After matching, we ask the past history, that do you focused on your breathe any time in past? Have you done meditation in past? Have you done exercise in past? Do you order online food too much in past? So we take multiple past history, we measure all the exposure, and after measuring those past history, we calculate odds ratio, and that is the way to analyze the result and finally present the data. So what are the 4 steps of case control? Selection of case and control, match them, ask past history of exposure, and then analyze the data with the help of odds ratio. What is odds ratio? We will discuss, and we will discuss it with separate example. But let's have this 4 point. Okay. Then in the cohort study, what are the 5 steps? First step is we will select study subject. And in selecting study subject, we just define our population. Like for example, in this meditation study, you can select that my study subjects will be
MBBS student of third prof. These are your study subject. Now from this study subject, you will obtain data on exposure. Exposure which you want to measure can be meditation, can be exercise. You can take any factor as exposure. Let's take meditation as exposure because we are trying to know whether meditation 2 minutes before sleep is causing weight loss or not. So exposure data you will take from all the MBBS student who are your study subject, third prof MBBS student. You will go and ask this question that do you focus on your breath or do you try to do meditation by any method for even 1 day in a week? Do you do meditation for even 1 day in a week, for even 2-3 minutes in a week or not? So suppose when you ask this question, 10 people said yes we do meditation, 90 people said no. घंटा मेडिटेशन का टाइम किसके पास है? एंजॉय करें, पार्टी करें कि मेडिटेशन करें, है ना? So 10 said only yes, 90 said no. So this 10 are the people who are exposed. They have something abnormal in them. They are doing meditation. And this 90 are the people who are non-exposed, who are just not having any risk factor in them. So first we select that we have to do it on the third prof student study subject. Then we take the data from the third prof student that how many do meditation, how many don't do meditation. So focus here. When we do case control, here we start with disease, obese, non-obese. So this is the main difference. When we do case control, we start with obese, non-obese. है ना? कॉमनली कहते हैं ना अपने दोस्त को कि अबे तू तो केस है बे. केस मतलब उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल है, कहीं खड़ा बाल, कोई कीड़ा उसके अंदर है. तो केस मीन्स एबनॉर्मल, केस मीन्स डिजीज. Whenever we say our friend you are a case man, it means he had some standing here somewhere poking in his butt or somewhere, and he has something abnormal, so we call him case. So similarly here also, case are disease, control are non-disease. So when we start with disease, non-disease, obese, non-obese, this is case control. But if we start with exposed, non-exposed, meditation present, meditation absent, that is cohort study. So in cohort, we obtain data on exposure first, that do you do meditation or do you not do meditation. Then the third step we do, we select comparison group and follow up. Like what is happening here is, first you said, okay, I will do the study on third prof, they are your study subject. Then you roam around in all the hostel rooms in night and you ask, do you do meditation or not? So this how you collected the data. And based on the collected data, now you know who are doing meditation. They will be the exposed group. And those who are not doing meditation, they will be the comparison group. So by taking the data on meditation, now you have two groups, exposed group and non-exposed or comparison group. So after taking data, we divide them into exposed, non-exposed or exposed and comparison group. Then the fourth step is, we will now continue in future for next 6 months. And after going in future for 6 months, we will compare that how many of the meditation group lose weight, how many of the non-meditation group lose weight, how many of the meditation group pass the exam, how many of the non-meditation group pass the exam. So we don't just look one outcome, we look at multiple outcome, starting with one risk factor or one exposure like meditation. So these are the 5 steps. First, select your third prof student, then ask them about meditation, and based on meditation question, divide them into exposed and comparison group. Then follow them for 6 months and finally analyze the data based on relative risk, attributable risk, and population attributable risk. This is cohort study, 5 steps. Okay, now let's also see the RCT 5 steps here so that we can easily compare these 3 studies. And remember, there is a hint here. Always the last step is analysis of data. In case control also analysis, cohort also analysis, and in RCT also assessment of outcome. So always last step is analysis. But in RCT what we do is, before you want to give your new medicine, or this time there is no medicine, this time you are asking them to do meditation. So this time you will not collect any
data from them, first you will write a protocol. Protocol means how you are going to do RCT on meditation. You will write the rules and regulation. Like you can put 3 rules. First rule is that all the participant in the study should be third prof MBBS student only. Second rule, all of those who will start the study, they will remain in my study till end. And third rule is that if they face any side effect or if they uh, discontinue doing meditation, they have to report us to the investigator, to you, at proper time. So these rules which we make before starting a study, these are known as protocol, and we submit this rule to ethics committee. Only after approval of ethics committee you can do some experiment on people. So that's why here we need to draw a protocol, because here you are going to do some intervention experiment. After drawing protocol, you will select reference and experiment population. See, what is reference and what is experimental population? Reference population is the big population. What is the big population? Young people of, let's say, Delhi. They are experiment population. Or you can say the MBBS college students are the experimental population, big population. From those MBBS college population, you are choosing one small experimental population of third prof. So the reference population is whole medical college population, and experimental population is only third prof student. So always reference population is big, from which we choose a small experimental population in the second step. In the third step, we ask them to do chooji booji. We ask them to choose chit A or B, whatever they want to choose. And then whoever choose chit A, you will make it sure personally that they are doing meditation every night before sleep for 2 minutes. How will you ensure it? You can give them some guided meditation 2-minute video, and whether they are playing or not, the phone data can record it. The phone data can know that how many days they had played that video. So you can get this intervention done on half of the people who choose chit A. And those who choose chit B, you will make it sure that they are not doing meditation. Because if they also start doing meditation, then the difference between two groups will not be appreciable. So one group you will do the intervention, one group you will make it sure they don't do the intervention. So what are you doing? You are manipulating them, or you are doing the intervention on them. So after they do randomization, after they choose the chit, in one group you do intervention, one group you did not do it. This is manipulation or interpretation. After doing this intervention on them, that you have to do meditation and one group not to do meditation, again you will do follow-up for 6 months. But the difference here in RCT is you are dividing them. They are not themselves divided like cohort. And you are dividing them, you are doing intervention. And then after follow-up, last step is same, assessment of outcome. So you can see in RCT and cohort, last 2 steps are same, follow-up, assessment, follow-up, analysis. So last 2 are same in RCT cohort, and anyway last step analysis is common in all 3. Let's revise the steps of RCT one more time. First we make a protocol. After making protocol, we draw reference population, and from which we draw experiment population. Then we do randomization as the third step. After randomization, we do intervention or manipulation, fourth step. Then we do follow-up, and after follow-up, we do assessment of result or outcome as the final 6th step. So there are 4 steps in case control, 5 in cohort, 6 in RCT. If you write this part, the steps properly, then examiner will be highly impressed, and you will get more than half marks just by writing the steps. So this page, I can say this is the most important page of today's discussion, through which any question on these 3 topics came, you can ensure 50% minimum marks. Now, we can discuss further. They can ask that explain cohort study with an example, or they ask, let's say, write short note on Framingham heart study. So I am explaining first cohort study with an example of Framingham heart study. Then I will also explain you case control study with an example. And after explaining case control cohort with example, which are separate big question,
Then we will understand the difference between case control cohort, which is the third important question. So let's understand what they did in Framingham Hurt study, why this study is so important. This study was done among in Massachusetts, America, between 30 to 59 year, 5,200 participant. In this 5,209 participant, they removed 82 people who were with chronic heart disease already. They removed them. And finally, there were around 5,100 people. So the first step they did was, because it's a cohort, what was the first step of cohort? First step of cohort, if you remember, selection of study subject. So from which area study subject were selected? From Massachusetts, 30 to 59 year people. These were the study subject. How many 30 to 59 year people? 5,127. They were the study subject selected. Then the second step is obtaining data on exposure. Let's say how they are doing it in Framingham study. So the second thing they start doing was collecting data on exposure. They asked about all these people. They were mostly doctors in the study of Framingham study. They were mostly doctors, but some general population was also taken. And all of the doctors and population were asked that क्या तुम सुट्टा पीते हो, क्या तुम दारू पीते हो, तुम गांजा क्यों नहीं फूकते हो, है ना? They ask about all the exposure risk factor of smoking, alcohol, marijuana smoking also. Then they also did the physical test on the people and measure their BP blood sugar before starting study. So this is the second step, collecting data on exposure. After collecting data on exposure, what was the third step in cohort? First was selecting the population. Remember, first was selection of study subject, then obtaining data on exposure. After obtaining data on exposure, the third is selection of comparison group. What are the comparison group you have to select? So to select the comparison group, first they select population, then they ask data of exposure. Then from this, they found out that out of these 5,127, those people who are not smoking, not drinking, they are the one who are comparison group. And those who are smoking and drinking, they have the risk factor present, so they become the exposed group. So first they selected the study subject, then they asked the data of exposure, then they selected the comparison group from the same group, same population. Those who were not smoking, drinking, they become comparison group. So this was the third group, selection of comparison group. After selection of comparison group, fourth step was follow up. So in the follow up, they actually examined every 2 year all the 5,127 participant till next 20 year. Every 2 year they ask them and to come and examine them, and if anyone die, they also compare and assimilated their death certificate record, that why kyun tapak gaya hai na, why they died, that also they collected. So this is the fourth step, follow up. And see, the follow up was till 20 year, very long follow up. After that, what is the fifth and last step of cohort study? Analysis of data through RR, AR, PAR. So in the fifth step, they analyze the data of RR, AR, PAR, and this is the fifth step of cohort study. And this is the thing which you have to write in Framingham Hurt study example. Do you want me to repeat Framingham Hurt study? Do let me know. Also, let me check the question which you are putting in the group. Okay, so hello, my dear friend. Someone was saying me to teach in Hindi. And Dr. Sutapa is asking a question, ki what is major difference between primary and index case? Okay, so about Hindi, should I teach in Hindi? Because I am from United States of Bihar, and so I can definitely talk in Hindi. It's my mother tongue. But then the only issue is if the people are not understanding Hindi, then they might feel left out. So if this is your wish to talk in Hindi, your wish is my command. Of course, I can discuss the things in Hindi.
आओ हिंदी में बात करते हैं। सो सुतापा सुमंता हैज दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर, सुतापा ने पूछा है कि प्राइमरी और इंडेक्स केस का बड़ा डिफरेंस क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, प्राइमरी केस वो होता है जो बीमारी के शुरू में सबसे पहले इन्फेक्ट होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी केस। जरूरी नहीं है कि प्राइमरी केस को ही हम रिपोर्ट करें पकड़े, जिसको पकड़ लिया गया, जिसको हेल्थ सिस्टम ने, हॉस्पिटल ने रिपोर्ट कर दिया, उसको कहते हैं इंडेक्स केस। तो प्राइमरी और इंडेक्स केस का पहला डिफरेंस ये है कि इंडेक्स केस वो होता है जो रिपोर्टेड होता है, प्राइमरी केस वो होता है जो रिपोर्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहला केस था वो प्राइमरी है, रिपोर्टेड हुआ वो इंडेक्स है। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्राइमरी केस ऑरिजिनेटर होता है इन्फेक्शन का, इंडेक्स केस जरूरी नहीं है कि ऑरिजिनेटर हो सकता है वो किसी ऑरिजिनेटर के टच में आया हो और फिर वो पकड़ा गया इसलिए इंडेक्स बन गया हो। ये दूसरी बात है। तीसरी बात तुम ये भी लिख सकते हो कि प्राइमरी केस को अगर पकड़ लेंगे तो वही इंडेक्स बन जाएगा। ओके, तो ये दो तीन बातें हैं जो अंतर है। बहुत आसानी से, आई होप कि वो जो स्टोरी हमने पढ़ी थी कि मैं चाइना में था और चाइना से आया और इंडिया में क्लास, चाइना से आते टाइम मुझे नहीं पकड़ पाए वो, फिर मैंने केरला में जाके क्लास ली और केरला में पहला केस रिपोर्ट हुआ। तो जो पहला केस रिपोर्ट हुआ वो इंडेक्स केस था, मैं था प्राइमरी केस, लेकिन क्योंकि मैं बच के निकल आया वहां से तो मैं इंडेक्स केस नहीं बना। अगर मुझे दिल्ली पे ही पकड़ लेते तो मैं ही इंडेक्स केस बन जाता। तो आई होप आप इससे सुतापा, डॉक्टर सुतापा, आप लिख पाओगे। अगर नहीं क्लियर है तो बताना। अच्छा, सुतापा इज सेइंग कि एक बार फ्रेमिंगम स्टडी फिर से बताइए। क्यों नहीं सुतापा, देखो हम लोग फ्रेमिंगम स्टडी फिर से समझते हैं। उन्होंने क्या किया फ्रेमिंगम स्टडी में, हम फ्रेमिंगम स्टडी भी समझेंगे और इसी के थ्रू कोहॉर्ट के पांचों स्टेप्स भी याद कर लेंगे। तो कभी फ्रेमिंगम स्टडी आपसे पूछा एग्जाम में तो साथ के साथ 5 स्टेप कोहॉर्ट के लिख दो, तो तुम्हारा एक्स्ट्रा मार्क्स भी बन जाएगा और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, इंफॉर्मेशन पूरे बच्चे के पास। तो उसमें देखो पहला काम क्या किया जाता है, सेलेक्टिंग ऑफ रेफरेंस पॉपुलेशन, कि जहां से हमें पूछना है, जिन लोगों से बात करनी है उनको चुनना। तो हमने सबसे पहले किनको चुना, हमने चुना मैसेच्यूट्स में से 5209 लोगों को जो कि 30 से 59 साल के बीच में थे। फिर कोहॉर्ट में दूसरा स्टेप क्या होता है, ठीक है तुमने चुन लिया, चुनने के बाद तुम्हें उनसे ये पूछना है कि कितने लोग एक्सपोज्ड हैं, कितने लोग एक्सपोज नहीं हैं। यू हैव टू कलेक्ट द डेटा ऑफ एक्सपोजर। तो हमने फिर दूसरी बार पूछा कि सुट्टा दारू गांजा फूक रहे हो कि नहीं, और फिर उनका बीपी शुगर ले लिया। तो ये हमने उनसे डेटा कलेक्ट किया, डेटा ऑफ एक्सपोजर कलेक्ट किया, इसको सेकंड स्टेप कहते हैं। अब डेटा ऑफ एक्सपोजर कलेक्ट करके फिर थर्ड स्टेप पे हम आते हैं। उसमें क्या करते थे हम लोग, थर्ड स्टेप में डेटा ऑफ एक्सपोजर कलेक्ट करके फिर हम लोग इनको कंपैरिजन ग्रुप में अलग कर लेते हैं। यानी जब हमसे उनसे पूछ लिया कि सुट्टा दारू पी रहे थे कि नहीं, तो जिन लोगों ने ना बोला कि हम नहीं फूक रहे थे, वो सब बन गए कंपैरिजन ग्रुप, और जिन्होंने हाँ बोला वो हो गए एक्सपोज्ड। ओके, तो थर्ड स्टेप में हमने कंपैरिजन ग्रुप को 5000 पॉपुलेशन में से, 5127 पॉपुलेशन में से अलग कर लिया। कौन था कंपैरिजन ग्रुप, जो सुट्टा दारू नहीं पी रहा था, वो कंपैरिजन ग्रुप था। इसके बाद कंपैरिजन ग्रुप निकल गया, तब हम लोग करते हैं फॉलो अप। और फ्रेमिंगम स्टडी में फॉलो अप हर 2 साल पे किया गया। उनको बुला बुला के उनके फिजिकल पैरामीटर चेक किए गए और उनसे स्मोकिंग अल्कोहल के बारे में पूछा गया कि अभी तक कर रहे हो या छोड़ दिए, या पहले कर रहे थे क्या आप शुरू कर दिए, नहीं करते थे अब शुरू कर दिए क्या। तो ये सारा हमने डेटा कलेक्ट किया फॉलो अप करके 20 साल तक। और उनका डेथ सेट, अगर कोई टपक गया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट का भी डेटा देखा कि उसकी मौत हुई क्यों। तो ये था चौथा स्टेप जिसमें हम लोग फॉलो अप करके डेटा लेते हैं। जब ये फॉलो अप करके डेटा ले लिया तो इस डेटा के बेसिस पे हमने ये पता लगा लिया कि हार्ट अटैक होने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक के। फ्रेमिंगम स्टडी ने हमें मेनली यही बताया, ये बताया कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं एमआई के, रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। लेकिन फ्रेमिंगम स्टडी में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसने स्ट्रेस के बारे में नहीं पूछा।
कि लाइफ में टेंशन है कि नहीं है, खुश महसूस करते हो या दुखी महसूस करते हो। और मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो आपने भी अपने फैमिली में देखा होगा, कि जब भी हमारे मम्मी पापा या किसी रिलेटिव को बीपी शुगर की प्रॉब्लम होती है या कैंसर होता है, तो उससे पहले उन्हें मेजर स्ट्रेस का कोई कोई ऐसा कांड होता है जिससे वो बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर ये बीपी शुगर बढ़ता है और कैंसर भी निकल के आता है। ऐसा मैं बार बार पा रहा हूँ कई लोगों के एग्जाम्पल्स देख देख के। तो वो चीज, इसमें स्ट्रेस नहीं पूछा गया, और इसके चलते क्या हुआ कि पूरा हैरिसन का बुक, पूरा मेडिसिन, सब कुछ जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में बात करता है ना, वो सारा का सारा डेटा बेसिकली फ्रेमिंगम स्टडी से आया है। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी इसीलिए बार बार पीएसएम वाले पूछते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग सारी चीज, ओबिसिटी, हार्ट अटैक वाले चीजों को जाने और पढ़ना शुरू किए। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि हमने खाने पे तो ध्यान दिया, एक्सरसाइज पे तो ध्यान दिया, और स्ट्रेस क्योंकि इसमें पूछा नहीं था, इसलिए हमने स्ट्रेस पे ध्यान ही नहीं दिया, वो हमारा स्टडी का सब्जेक्ट बना ही नहीं। इसीलिए जो मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा था वो मेडिटेशन का दे रहा था, क्योंकि मेडिटेशन से आपको ये पता चल जाता है कि सारे थॉट टेम्पररी हैं, वो आएंगे और जाएंगे, वो बस हाथी के पाद हैं, बादल हैं। तो तुम जब थॉट को लेके सीरियस नहीं होगे, थॉट को दिन भर घुमाते हो, तभी तो टेंशन में आते हो। तो अगर थॉट को घुमाओगे नहीं तो टेंशन नहीं होगा, और टेंशन नहीं होगा तो बीपी शुगर कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि फ्रेमिंगम हेल्थ स्टडी के पांचों स्टेप को तुम अच्छे से याद कर लो। पहला स्टेप था कि मैसेच्यूसेट्स से 5209 लोगों को, उन लोगों को लिया गया जो 30 से 59 साल के बीच में थे। दूसरा स्टेप यह है कि हमने उनसे डेटा ऑफ एक्सपोजर कलेक्ट किया कि सुट्टा, दारू, गांजा कौन पी रहा है और बीपी शुगर कितना है। तीसरा स्टेप यह है कि डेटा निकलने के बाद वो लोग जो सुट्टा, दारू नहीं पी रहे थे, उनको बना दिया गया कंपैरिजन ग्रुप, या जिनका बीपी शुगर नॉर्मल था, सुट्टा, दारू नहीं था, वो बन गए कंपैरिजन ग्रुप। तो हमने क्वेश्चन पूछ के कंपैरिजन ग्रुप निकाला, ये तीसरा स्टेप था। कंपैरिजन ग्रुप निकलने के बाद हम फॉलो अप करते हैं, जो हमने फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी में 20 साल तक किया, और फॉलो अप करके फिर आखिरी टाइम में रिलेटिव रिस्क एआर और पीएआर आता है, उसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं कि किन किन कारणों से हार्ट अटैक आया। तो फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी का मेन यही यूज है कि उसने सारे हार्ट अटैक के कारणों के बारे में हमें बताया डिटेल में, क्योंकि ये स्टडी का फॉलोअप 20 साल तक था। तो क्या ये पांचों स्टेप कोहॉर्ट के और पांचों स्टेप फ्रेमिंगम के आसानी से इस एग्जांपल से याद हो पाए? आई होप बिल्कुल हो पाए, क्योंकि वो इसी तरह से 1 2 3 4 5 करके समझाया है, और हमने 2 बार रिपीट भी कर दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज फील फ्री करें, दोबारा पूछें। चलो, अब सुतापाई सिंह सर, प्लीज डू मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑल्सो। यस डियर, हमें आरआर एआर पीएआर का जो मैथमेटिकल पार्ट है वो भी समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो आरआर एआर पीएआर से मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आओ इन तीनों टर्म्स को कोहॉर्ट में कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, देखो, आरआर एआर पीएआर को समझने के लिए एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेके देखो, कि मान लो आपको 100 लोग हैं जो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, ये हो गए एक्सपोज्ड, क्योंकि इनमें कुछ खतरा प्रेजेंट है, कारण प्रेजेंट है। फिर आपने इनको कंपेयर किया उन 100 लोगों से, उन 100 दोस्तों से जो दारू पी के गाड़ी नहीं चलाते हैं, नॉन अल्कोहलिक, है ना। तो आपने अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक लोगों को ले लिया। ये आपने कैसे लिया? सबसे पहले तो आप शहर में 30 से 30 टू 59 ईयर के लोगों से जाके हिस्ट्री लिए कि किसको किसको ड्राइविंग कर, कौन कौन ड्राइविंग करता है। तो पहला आपने क्या किया? सेलेक्ट किया स्टडी पॉपुलेशन। फिर आपने उन सभी 30 टू 59 ईयर के लोगों से डेटा लिया कि भाई क्या तुम दारू पी के चलाते हो या बिना पिए चलाते हो। तो जिन लोगों ने 100 लोगों ने बोला कि नहीं हम दारू पी के नहीं चलाते हैं, वो नॉन अल्कोहलिक ग्रुप में आ गए, या हम दारू नहीं पीते हैं, वो नॉन अल्कोहलिक में आ गए। और जिन 100 ने बोल दिया कि हम दारू पीते हैं, वो अल्कोहलिक में आ गए। तो हमने सेकंड पॉइंट में उनसे डेटा ऑफ एक्सपोजर लिया, और डेटा ऑफ एक्सपोजर लेने से थर्ड स्टेप क्या हो गया कि हमें कंपैरिजन ग्रुप मिल गया। कंपैरिजन ग्रुप का मतलब होता है नॉन एक्सपोज्ड, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है या कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। ओके, अब देखो, जब हमें कंपैरिजन ग्रुप मिल गया, अब हम क्या करेंगे? फॉलो अप शुरू करेंगे।
तो हमने दोनों ग्रुप का फॉलो अप किया, सपोज 1 साल तक फॉलो अप किया, और 1 साल तक फॉलो अप करने के बाद अल्कोहलिक वालों में मान लेते हैं 20 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, 10 लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो गई, और 80 लोगों ने खूब दबा के डांस किया, है ना। क्योंकि मैं कहना यह चाह रहा हूं कि किसी भी एक कारण के बहुत सारे परिणाम होते हैं। तो यहां ऊपर शुरुआत होता है कारण है, कारण नहीं है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, रिस्क फैक्टर एब्सेंट, और कहानी कहां तक जाती है, आउटकम की ओर, परिणाम की ओर, बीमारी की ओर, है ना। अब यही सेम तीनों चीज हम उनसे भी पूछेंगे जो कंपैरिजन ग्रुप है, नॉन एक्सपोज्ड है। तो नॉन एक्सपोज ग्रुप में क्या लगता है, इधर अगर 20 एक्सीडेंट हुआ है तो इधर कितना होगा, मान लो इधर 5 हुआ, क्योंकि ये दारू वाले किसी को तो जाके ठोकेंगे, और कुछ एक्सीडेंट इसलिए भी होगा कि वो सोया नहीं था, या वो रोड खराब थी, लाइट नहीं थी, या अचानक गाय भैंस आ गई रोड पे। तो एक्सीडेंट और भी रीजन से हो सकते हैं, वो इधर आ गए। फिर दूसरा हम इसमें भी गैस पूछेंगे, मान लो इसमें भी गैस की प्रॉब्लम है 8 लोगों को। और तीसरा हम लोग पूछेंगे कि भाई डांस कितने लोग करते हैं, तो हो सकता है इसमें डांस कर रहे हों 70 लोग, है ना। तो 2-3 चीज हम आउटकम ले सकते हैं, एलएफटी ले सकते हैं, कई सारी और भी चीजें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आओ किसी एक चीज को कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब आप एक बात बोल सकते हो कि सर 100 लिया था, यहां तो 80, 20 और 10, 110 हो गए। 110 इसलिए हो गए क्योंकि एक इंसान में 2-3 आउटकम भी तो हो सकता है। जिसका एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है वो एक्सीडेंट करते करते डांस भी कर रहा था, है ना? डांस करते हुए चला रहा था दारू पी के, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो कई चीज एक साथ भी हो सकती है, इसलिए नंबर 100 से ज्यादा भी हो सकता है। आओ अब हम मैथमेटिकल पार्ट कंपेयर करते हैं। एक तरफ 20 एक्सीडेंट हुआ है, एक तरफ 5, इसको देखते हैं। तो जब भी हम 20 और 5 को कंपेयर करना चाहेंगे, तो पहला तो ये स्टेप है कि इसको एक 2x2 टेबल में लिख दो, 20 और 5 को। क्या हो रहा है, किस चीज को हम लोग लिखना चाह रहे हैं, एक्सीडेंट को। बीमारी को हमेशा कोशिश करते हैं ऊपर लिखने का। उसमें 20 को एक्सीडेंट हो रहा है, किन लोगों में से एक्सीडेंट हो रहा है, अल्कोहल वालों में से। और 5 का एक्सीडेंट किस में से हो रहा है, जो लोग अल्कोहलिक नहीं हैं उनमें। ठीक है। और अभी अभी हमने बात करी कि जो लोग दारू पी रहे हैं, अल्कोहलिक हैं, वही लोगों के अंदर कारण है, कारण है, खतरा है। तो कारण या खतरा को ही हम एक्सपोजर लिखते हैं, एक्सपोज्ड। और एक्सपोज्ड कौन कौन हो गया, A+B एक्सपोज्ड हो गया। टोटल 100 लोग थे जो दारू पी रहे थे, तो A+B कितना है, 100 है। अब देखो नहीं दारू पीने वाले कितने थे, वो भी 100 लोग थे, और उनको हम क्या कहते हैं कि कारण एब्सेंट है, कारण नहीं है, नॉन एक्सपोज्ड कहते हैं। और नॉन एक्सपोज्ड को ही लिखते हैं कंपैरिजन ग्रुप। और नॉन एक्सपोज यहां पर क्या होगा, अगर ये C और ये D है, तो नॉन एक्सपोज होगा C+D, और C+D कितना है, ये भी 100 है। तो आओ अब तीनों मैथमेटिकल चीज को बड़े आसानी से समझते हैं। पहला है रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क का क्या मतलब होता है कि भैया कितना कांड, कितना नया केस एक्सीडेंट का उन लोगों में हुआ जो कि दरुए थे, दारू पी के चला रहे थे, डिवाइडेड बाय कितना इंसिडेंस या एक्सीडेंट उन लोगों में हुआ जो बिना दारू पिए चला रहे थे, नॉन एक्सपोज्ड थे। ओके, इसको कहते हैं रिलेटिव रिस्क, कि ठोकने का खतरा दारू वालों में दारू नहीं पीने वालों के मुकाबले कितना गुना ज्यादा है, इसको रिलेटिव रिस्क कहते हैं। तो देखो, अगर इसको हम फॉर्मूला में लिखना चाहें, तो यहां पर कौन कौन है जो एक्सपोज्ड है, खतरा किसमें किसमें है, खतरा है A+B में। और A+B में से कितने लोगों को एक्सीडेंट हुआ है, A को एक्सीडेंट हुआ है या B को, क्लियरली दिख रहा है एक्सीडेंट A को हुआ है। तो एक्सीडेंट दरुए में लिखना है ऊपर, वो होगा A/A+B, और नीचे लिखना है कि कितना एक्सीडेंट हुआ जो नहीं दारू पी रहे थे, तो नहीं दारू पीने वाले लोग थे C+D, और उसमें से कितने को एक्सीडेंट हुआ, C को। तो रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला है A/A+B/C/C+D। लेकिन यहां एक सीधी सी बात यह है कि A+B भी 100 है और C+D भी 100 है। अब अगर दोनों 100 होगा
तो आपस में कट्टम कुट्टी हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच के आएगा, A/C। अगर दोनों बराबर होते हैं, 100-100 हैं, तो कट जाएंगे और कटेंगे तो A/C बच जाएगा। अब यहां देखो हमारे एग्जाम्पल में A कितना है, A है 20, C कितना है 5। तो यानी ये तो साफ दिख रहा है कि कितना गुना ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है दरुओं में। दरुओं ने कितनी ज्यादा गाड़ी ठोकी है, 4 गुना ज्यादा, क्योंकि 20/5 4 होता है। तो रिलेटिव रिस्क का मतलब सीधा है कि कितना गुना ज्यादा एक्सीडेंट, इंसिडेंस, नया केस दरुओं में हो रहा है, एक्सपोजर में हो रहा है, एज कंपेयर टू कितना सारा एक्सीडेंट नॉन एक्सपोजर में, नॉन दरुओं में हो रहा है। और ये रिलेटिव रिस्क जब भी होगा तो टाइम वर्ड लिखा होगा उसके पीछे, कितने गुना ज्यादा, 4 टाइम मोर एक्सीडेंट इन एक्सपोज्ड, 4 टाइम मोर एक्सीडेंट इन एक्सपोज्ड। ये निकल के आ गया कि जो दरुए थे उनमें 4 गुना ज्यादा एक्सीडेंट था। तो ये रिलेटिव रिस्क निकल के आ गया। अब देखो दूसरा चीज हमें निकालना है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, वो समझते हैं। देखो एट्रीब्यूटेबल रिस्क, एक सीधा सा सवाल अगर मैं पूछूं कि तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल क्यों हो, तो मैं जब भी ये सवाल पूछता हूं क्लासेस में, तो बच्चे पहले तो सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं क्या। ऑफ कोर्स आप सब सक्सेसफुल हो, क्योंकि आप किसी भी स्कूल में जाके बच्चों से पूछो फ्यूचर में क्या बनना है, 80% बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। और आप ऑलरेडी डॉक्टर बन रहे हो, 3rd ईयर में हो तो डॉक्टर बनोगे ही बनोगे अब तो आगे, है ना, अनलेस कि कुछ बहुत बड़ा कांड ना हो जाए। तो आप वो सब जिंदगी जी रहे हो जो 80% बच्चों का सपना है। आप इंडिया के टॉप 10% यूथ में हो और फ्यूचर में आप सब के सब लोग बहुत अमीर और बहुत रिस्पेक्टेड होने वाले हो। ये मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी। पैसा तो बहुत होगा और इज्जत तो आपके ऊपर है, लेकिन आप कमा ही लोगे, क्योंकि डॉक्टर को इज्जत थोड़ी मिलती भी है, पुलिस भी नहीं पकड़ती है ना। तो जब मैं पूछूं आपसे कि आप किसकी वजह से सक्सेस हुए हो, तो मैं पूछना चाह रहा हूं ड्यू टू, किसको आप अपने सक्सेस का श्रेय देना चाह रहे हो। तो यूजुअली तो लोग कहते हैं माँ बाप को, लेकिन अभी पिछले बैच में एक बंदी थी, वो बोली कि सर खुद को, मैंने पढ़ा मैं हुई सक्सेस। मैंने बोला ये भी सही बात है ना। फिर एक बैच में बोली कि टीचर को। मैंने बोला यार तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो यार टीचर को, है ना, इतना थोड़ी कुछ टीचर करता है, तुम्हारी ही हार्डवर्क है। तो जब भी हम किसी को श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं, उसको एट्रीब्यूटेबल रिस्क से निकालते हैं। अब देखो हमारी स्टोरी में क्या था, 20 एक्सीडेंट हुआ था किन में, 20 एक्सीडेंट हुआ था दारू पीने वालों में, और 5 एक्सीडेंट हुआ था किन में, उन लोगों में जो दारू नहीं पी रहे थे। तो एक बात सोच के बताओ कि कितना एक्सीडेंट का कारण दारू है। दारू वाले ग्रुप में 20 एक्सीडेंट हुए हैं, 20 में से कितने एक्सीडेंट का कारण दारू है? क्या 20 एक्सीडेंट दारू के ही वजह से हुए हैं? ऐसा नहीं है कि 20 एक्सीडेंट दारू की ही वजह से हुए हैं, क्योंकि 5 तो उनमें भी हो जाते हैं जो दारू नहीं पीते। तो सारा 20 एक्सीडेंट का इल्जाम आप दारू पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि 5 बिना पिए भी हो रहे हैं। 20 में से 15 का ही इल्जाम आप दारू पे लगा सकते हो, क्योंकि 5 इस ग्रुप में भी किसी और कारण से हुआ होगा, है ना। बात समझ में आया क्या हो रहा है यहां पर? हम पूछ रहे हैं कि दारुओं में से 20 एक्सीडेंट हुआ है, उसमें से कितना का क्रेडिट दारू पे जाता है। तो सारे 20 का क्रेडिट दारू पे नहीं जा सकता है, क्योंकि 5 तो उनमें भी जो हो जा रहा है जो दारू नहीं पी रहे। तो कितने का क्रेडिट दारू पे गया? 20 में से 15 का क्रेडिट दारू पे गया। और ये 15 कैसे आया? 15 लाने के लिए आपने पहले वो एक्सीडेंट जो हुए थे दरुओं में उनको लिखा। कितने हुए थे दरुओं में एक्सीडेंट, इंसिडेंस इन एक्सपोज कितने हुए थे दरुओं में? दरुए कौन है? जिनको हम, जिनमें कारण है दारू है, एक्सपोजर को ही तो अल्कोहलिक कह रहे हैं। तो कितने दारू वालों में एक्सीडेंट हुआ था? 20। जब आप 20 को 5 से माइनस किए तभी तो 15 आया। तो यानी आपने क्या किया, एक्सपोज्ड के इंसिडेंस को नॉन एक्सपोज्ड के इंसिडेंस से माइनस कर दिया। 20 को 5 से माइनस किया तभी तो 15 आया। आप मेरी कहानी समझ पा रहे हैं? 20 एक्सीडेंट दारुओं में हुए हैं, लेकिन 20 का इल्जाम, 20 का श्रेय दारू को नहीं जाता है,
क्योंकि 5 तो दूसरे कारण से भी हो जाते हैं। 15 का ही 20 में से क्रेडिट दारू पे जाता है। और 15 कैसे आया? जब आप 20 को 5 से माइनस किए, यानी आपने एक्सपोज्ड के इंसिडेंस को नॉन एक्सपोज्ड के इंसिडेंस से माइनस किया। और इसको किससे कंपेयर किया? इसको कंपेयर किया उन 20 एक्सीडेंट से जो दरुओं में हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड बाय माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड मल्टीप्लाई बाय 100। समझ रहे हो क्यों ये फॉर्मूला निकल के आया? कहने की बात बस इतनी है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये बताता है कि जो बीमारी हुई है उसमें से कितनी बीमारी इस कारण की वजह से हुई है। जैसे यहां पर 20 एक्सीडेंट हुआ है दारू वालों में, तो 20 में से कितना एक्सीडेंट दारू के वजह से हुआ है? सिर्फ 15, क्योंकि 5 तो और भी रीजन से कर लेंगे। तो ये 15 लाने के लिए हमने एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड के इंसिडेंट्स को माइनस किया और फिर इस 15 को 20 में से कंपेयर कर दिया। यह है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। और आप भी जानते हो कि 15/20 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 100। 3/4 इंटू 100 का मतलब है 75%। तो अगर एट्रीब्यूटेबल रिस्क है 75%, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि दरुओं में जो 20 एक्सीडेंट हो रहा है उसमें से 15 एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ है, बाकी कोई और कारण से हुआ है। अगर एट्रीब्यूटेबल रिस्क 75% है तो सीधा मतलब है कि इन एक्सपोज्ड दरुओं में, अल्कोहलिक में 75% एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? दरुओं में 75% एक्सीडेंट दारू के वजह से हो रहा है। तो यह है एट्रीब्यूटेबल रिस्क कि टोटल जो एक्सीडेंट हुआ है दरुओं में उसमें से कितना का क्रेडिट दारू पे जा रहा है। टोटल जो बीमार हुए हैं एक्सपोजर में से, जिनके अंदर कारण था, उनमें से जो बीमार हुए हैं उसमें से कितने उस कारण की वजह से बीमार हुए हैं। जैसे यहाँ पे 20 एक्सीडेंट हुआ है तो 20 में से कितने दारू की वजह से हुआ है, ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क बताता है। और ये 75% निकल के आ रहा है। अब जो समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। हाँ, सुतापा का एक सवाल है, वो सुन लेते हैं कि सर ऑलवेज टोटल एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज आर सेम एंड ऑलवेज कम C/D? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमेशा A+B और C+D बराबर होते तो मैं आपको ये बड़ा फॉर्मूला लिखता ही क्यों? फिर मैं सीधे A/C ही लिख देता। हमेशा जरूरी नहीं है कि बराबर होंगे, कई बार अनइक्वल भी होते हैं। जब अनइक्वल होंगे तो ये कटेगा नहीं, तब आपको बड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल डॉक्टर सुतापा। ये सवाल ध्यान रखना इस बात का, A/C तभी फॉर्मूला निकल के आता है जब दोनों बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं है तो बड़ा वाला फॉर्मूला A/A/A+B/C/C+D आपको यूज करना होगा। वेरी गुड सुतापा। चलो नाउ अब देखो, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एक बार और पढ़ाएं। क्यों नहीं मेरे भाई, 2 बार और पढ़ाऊंगा, 3 बार और पढ़ाऊंगा, जितने बार बोलोगे उतनी बार और पढ़ाऊंगा। योर विश इज माई कमांड। यू सेड टू स्टॉप टीचिंग इन इंग्लिश, आई स्टॉप्ड इट। यू सेड टीच इन हिंदी, आई एम टीचिंग। यू विल आस्क इट अगेन एंड अगेन, आई विल टेल इट अगेन एंड अगेन। ओके, फील फ्री, कीप आस्किंग योर डाउट एंड क्वेश्चन। देखो बेड़ू, अभी क्या है, इस एग्जाम्पल को समझ गए हो या मैं दूसरा एग्जाम्पल से समझाऊं या इसी एग्जाम्पल को समझाऊं दोबारा? ये बता दो मुझे, क्योंकि एट्रीब्यूटेबल रिस्क है बड़ा सिंपल चीज। सिर्फ ये पता लगाने के लिए काम आता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क कि जो बीमारी निकल के आ रही है एक्सपोज्ड ग्रुप में, कारण वाला ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप कैसा है? एक्सपोज्ड है, इसमें कारण है। तो कारण वाले ग्रुप में जो लोग खतरा उठा रहे हैं, उस वाले ग्रुप में कितनों के अंदर बीमारी उस खतरे की वजह से हुई है। जैसे यहां पे खतरे वाला ग्रुप है दरुओं का ग्रुप, तो दरुओं के ग्रुप में 20 एक्सीडेंट हुआ है। 20 में से कितना दारू की वजह से हुआ है, इसी को एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं कि 20 में से कितना दारू की वजह से हुआ। तो क्या 20 में से सारा 20 दारू की वजह से हुआ? नहीं, क्योंकि 5 तो उनमें भी हो जा रहा है जो दारू नहीं पी रहे। तो 20 में से सिर्फ 15 दारू की वजह से हुआ है। अब ये 15 आया कैसे? 15 आने के लिए हमने 20 को 5 से माइनस किया। 20 क्या है? दरुओं में एक्सीडेंट। 5 क्या है? नॉन दरुओं में एक्सीडेंट। जब हम 20 को 5 से माइनस करेंगे तब 15 आएगा, और 15 को 20 से डिवाइड करेंगे यानी इंसिडेंस इन एक्सपोज से, तो परसेंटेज 75% निकल के आएगा। और यही एट्रीब्यूटेबल रिस्क का फॉर्मूला है, इंसिडेंस इन एक्सपोज माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज
बाई इंसिडेंस इन एक्सपोज इनटू 100। कई बार आपको ये सिर्फ फॉर्मूला पूछते हैं, कई बार एआर पे पूरा शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझ गए हो तो आप आसानी से समझा सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो दोबारा जरूर पूछना। देखो पूछ भी दिया हमारे डियर सुतापा ने कि सर एक और एग्जाम्पल से समझाइए। क्यों नहीं, मैं बार बार एग्जाम्पल दूंगा, आप बस समझिए। मान लो कुछ और काम करते हैं, है ना, नया कुछ एक्सपेरिमेंट अच्छा करते हैं। हाँ, आपके बैच में कुछ लड़के लड़कियां ऐसे होंगे जो कंबाइंड स्टडी करते हैं, ठीक है, और कुछ हैं ऐसे जो कि सिंगल सिंगल अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपने पता लगाना चाहा कि भाई क्या अच्छा है, क्या सिंगल सिंगल पढ़ाई किया जाए या साथ में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मार्क्स ज्यादा अच्छा आएगा, आप ये जानना चाहते हो। तो आपने इन दोनों ग्रुप को 1 साल तक के लिए फॉलो अप करके देखा ताकि फिर आप सही से डिसीजन ले पाओ कि नेक्स्ट ईयर सिंगल रहा जाए या कंबाइंड हो जाए। तो दोनों ग्रुप में आपने मान लो 100 लें या अलग अलग ले लें, है ना। हमने एक मेडिटेशन वाला स्टडी भी किया था, वो भी एग्जांपल में ले सकते हैं, लेकिन चलते हैं इसी स्टडी के एग्जांपल से, ये अच्छा इंटरेस्टिंग स्टडी है। तो कंबाइंड स्टडी वाले ग्रुप में आपने मान लो 100 लिया था और सिंगल वाले में आपने लिया था 200 ले लिया। सिंगल 200 है, कंबाइंड वाले 100 हैं, ओके। अगर आप अलग नंबर ले लोगे ना तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क का फॉर्मूला भी बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन उससे हमें ये चीज बेटर समझ में आएगी क्योंकि कभी कभी अलग नंबर भी दे देते हैं। तो आप क्या इनमें दोनों में क्या कंपेयर करोगे, कंबाइंड और सिंगल स्टडी में क्या अंतर हो सकता है? एक तो अंतर हो सकता है कि उनके नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो आप नंबर्स कंपेयर कर सकते हो 1 साल के बाद कि किसका नंबर ज्यादा आया। दूसरा आप ये देख सकते हो कि भैया किसको नींद कम आई। क्या लगता है किसको नींद कम आएगी, कंबाइंड स्टडी करने वालों को या सिंगल स्टडी करने वाले को? किनकी नींदें उड़ेंगी ये आप देख रहे हो, इसको कहते हैं स्लीप डिप्राइवेशन, ओके। स्लीप डिप्राइवेशन को आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा कि लेस देन 4 आवर अगर कोई सो रहा है फॉर मोर देन 5 डेज, हफ्ते में 5 दिन अगर 4 घंटे से कम सोते हो तो इसका पक्का मतलब है कि तुम्हारी नींद जरूरत से बहुत कम है। और जब नींद जरूरत से कम होती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इसलिए प्लीज सोने को इंपॉर्टेंस दिया करो ताकि मेमोरी हिप्पोकैम्पल एरिया में अच्छे से बन पाए। स्लीप उसके लिए जरूरी है, ऐसे कुछ स्टडीज कहते हैं। तो चलो आपने और दोनों ग्रुप से पूछ लिया कि भैया क्या क्या मार्क्स आए 1 साल के बाद और कितने कितने लोगों की नींद गई। तो क्या लगता है आपको? अब देखो अनदर एग्जांपल ही तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम टेलिंग अनदर एग्जांपल डियर, डोंट वरी, ओके ना। बताओ क्या लगता है इसमें कितनों की नींद चली जाएगी 100 में से? मान लो इसमें 100 में से नींद गई है आपको 20 लोगों की, और जो सिंगल स्टडी कर रहे हैं ऐसा थोड़ी वो चैन से सो रहे हैं, वो भी कुछ और कर रहे हैं। तो सिंगल स्टडी में नींद चली गई है 10 की, इसमें 20 की नींद गई, इसमें 10 की नींद गई। तो अगर इसको दोनों को 100 लेंगे ना तो आप इसको समझोगे आसानी से, इसलिए 200 मतलब दोनों को 100 लेके हम लोग पहले समझा देते हैं, फिर आप बोलोगे तो एक एग्जांपल न्यूमेरिकल बना के अलग अलग करके भी दिखा दूंगा मैं। लेकिन अभी समझो 100 है दोनों तरफ से, 100 है। एक तरफ 20 की नींद गई, एक तरफ 10 की नींद गई। तो पहला चीज अगर दोनों बराबर हैं तो रिलेटिव रिस्क कितना निकल के आ गया, नींद उड़ने के चांस कंबाइंड स्टडी करने से कितना ज्यादा है। एक तरफ 20 लोगों की नींद गई, एक तरफ 10, तो नींद उड़ने के चांस 2 गुना ज्यादा है, 2 टाइम मोर चांस है कि नींद उड़ जाएगी। इसको कहते हैं रिलेटिव रिस्क, कि जो लोग कंबाइंड पढ़ रहे थे वो एक्सपोज थे, उनके अंदर कुछ कारण था, उसमें 20 का नींद गया, और जो लोग सिंगल पढ़ रहे थे नॉन एक्सपोज थे उसमें 10 का नींद गया। तो इंसिडेंस इन एक्सपोज बाय इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज करते हैं तो रिलेटिव रिस्क आ जाता है
जो अगर दोनों बराबर होगा तो A/C हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा, यानी 2 गुना नींद ज्यादा जाएगी। अब एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है ये समझो इसी एग्जांपल से। देखो, ठीक है, मैं मान लिया कि 20 लोगों की नींद गई है उसमें जो कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इस 20 में से क्या सारे 20 लोगों की नींद इसीलिए गई है क्योंकि वो कंबाइंड स्टडी करते थे? नहीं, 10 लोग जो सिंगल स्टडी करते थे उनकी भी नींद जा चुकी है। तो सारे 20 नींद उड़ने का क्रेडिट आप कंबाइंड स्टडी को नहीं दे सकते हो, क्योंकि 10 तो उन लोगों में भी नींद चली गई है जो सिंगल पढ़ रहे थे, है ना? तो 20 में से 10 कुछ और रीजन से नहीं सो रहे हैं, 10 केवल कंबाइंड स्टडी के चलते नहीं सो पा रहे हैं, है ना? सारा, क्योंकि अगर केवल कंबाइंड स्टडी करने के चलते नींद उड़ती तो सिंगल वाले ग्रुप में नींद उड़ने वाले लोग 0 होते, है ना? सिंगल वालों की भी नींद उड़ रही है, यानी सारा 20 के 20 का नींद उड़ने का कारण कंबाइंड स्टडी नहीं है, 20 में से 10 किसी और कारण से नींद उड़ रही है। तो जब हम पता लगाना चाहेंगे कि 20 में से कितनों के नींद उड़ने का कारण कंबाइंड स्टडी है, तो हम क्या करेंगे? हम 20 में से 10 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 लोग तो वैसे भी नहीं सोएंगे अगर कंबाइंड स्टडी करें चाहे ना करें। तो अब ये 20 माइनस 10 किया, इसका मतलब हमने क्या किया? हमने इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड लिया कि भाई जो साथ में पढ़ रहे थे उसमें कितना नींद गया, 20, और इसको माइनस किया इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज से, जो सिंगल पढ़ रहे थे उसमें कितनी नींद गई, वो हो गया 10, और फिर इसको कंपेयर किया इंसिडेंस इन एक्सपोज से जो कि है 20, और इसको 100 से इंटू कर दिया। तो ये खुद ही आप समझ रहे हो कि भैया 20 में से 10 लोगों की नींद कंबाइंड पढ़ने के गई है, और 10/20 कितना होता है? 10/20 यानी हाफ हो गया, हाफ को 100 से इंटू करोगे तो 50% हो जाएगा। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क कितना आ जाएगा? 20 माइनस 10/20 यानी 10/20 इंटू 100, 10/20 इंटू 100 मीन्स 50%। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि हमारी स्टडी में जो लोग कंबाइंड स्टडी कर रहे थे उसमें से 50% लोगों की नींद कंबाइंड स्टडी की वजह से गई है, और 50% लोगों की नींद किसी और कारण से गई है। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या समझ में आया आपको? ये हमें ये बताता है कि जिन लोगों में बीमारी है, जैसे यहां बीमारी है स्लीप डिप्राइवेशन, तो उस बीमारी के लिए कितने लोग इसलिए बीमार हुए कि वो कंबाइंड स्टडी कर रहे थे, ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क बताता है कि अगर 20 लोग बीमार हुए तो 20 में से कितने कंबाइंड स्टडी की वजह से बीमार हुए, ड्यू टू कंबाइंड स्टडी हाउ मेनी आर फॉलिंग हैविंग स्लीप डिप्राइवेशन, दैट इज व्हाट एट्रीब्यूटेबल रिस्क विल टेल। सो वो यहां पे निकल के आया 50%। तो क्या ये एग्जांपल समझ में आया, या मैं और एक तीसरा एग्जांपल भी दे सकता हूं? क्या सुतापा ये एग्जांपल समझ में आया? अंडरस्टैंड, वेरी गुड। तो यही एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। अब आओ हम लोग अपने इस एक्सीडेंट और अल्कोहल वाले स्टडी से पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क को समझते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क? वेरी गुड सुतापा, यू आर सेइंग यू अंडरस्टूड, दैट इज वेरी गुड फॉर मी टू नो। चलो देखो, व्हाट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। देखो, सीधी सीधी सी बात है कि भाई पूरी जनता में टोटल एक्सीडेंट कितना हो रहा है। जो अल्कोहलिक हैं उनमें हो रहा था 20 एक्सीडेंट, जो नॉन अल्कोहलिक थे, दारू नहीं पीते थे, उनमें हो रहा था 5 एक्सीडेंट। तो पूरी जनता में कितना एक्सीडेंट हो रहा है? टोटल एक्सीडेंट हो रहा है 25। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क हमें यह बताता है कि अगर सारी जनता दारू पीना छोड़ दे तो एक्सीडेंट कितना से कम हो जाएगा। पीएआर क्या बताता है कि इफ पॉपुलेशन ऑफ आवर स्टडी, इफ आवर स्टडी पॉपुलेशन, पूरी जनता जो हमारे स्टडी में है, इफ स्टडी पॉपुलेशन स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप दिस रिस्क बिहेवियर। व्हाट इज द रिस्क बिहेवियर? ड्रिंकिंग, है ना? यहां पे खतरा वाला काम अगर क्या है? दारू पीना। तो अगर तुम पूरी जनता में से खतरा वाला काम जो अल्कोहल है उसको हटा दो तो कितने से एक्सीडेंट कम होगा, ये पीएआर है। यानी पीएआर ये बताता है
कि अगर पॉपुलेशन दारू पीना छोड़ दे, स्टॉप अल्कोहल, देन एक्सीडेंट विल डिक्रीज बाय हाउ मच, एक्सीडेंट कितने से कम होगा, ये बताता है पीएआर। ये आपको बताता है पीएआर कि सब लोग दारू पीना छोड़ दें तो एक्सीडेंट कितने से कम हो जाएगा। तो देखो, टोटल एक्सीडेंट हो रहा है 25। अब 25 है टोटल एक्सीडेंट, है ना, और टोटल जनता कितनी है 200। 100 थी दरुए, 100 थे नॉन दरुए, तो 200 जनता में से 25 एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन अगर पूरी जनता दारू पीना छोड़ दे तो एक्सीडेंट कितना कम होगा? अगर पूरी जनता दारू पीना छोड़ दे तो ये पूरा अल्कोहल ग्रुप का 20 एक्सीडेंट कम हो जाएगा, यानी 25 की जगह सिर्फ 5 एक्सीडेंट हुआ करेंगे अगर पूरी जनता दारू पीना छोड़ दे तो ये 20 कैसे, है ना, कितने से कम होगा एक्सीडेंट? एक्सीडेंट 20 से कम होगा, पूरा अल्कोहलिक ग्रुप ही गायब हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल ही गायब हो गया। तो हमें 20 से कम होगा एक्सीडेंट, ये निकालना है। अब 20 कैसे आएगा सोचो। 20 का लाने का ये तरीका है कि पहले पूरी पॉपुलेशन में 25 एक्सीडेंट हुआ था, तो पूरे पॉपुलेशन में कितना एक्सीडेंट हुआ है वो लिख लो, वो हो गया 25। फिर 25 को 5 से माइनस कर दो तो 20 आ जाएगा, है ना। यानी पॉपुलेशन को नॉन एक्सपोज से माइनस करेंगे, 20 को, टोटल पॉपुलेशन के 25 एक्सीडेंट थे, उनको हम 5 जो नहीं पी के भी एक्सीडेंट कर रहे थे उनसे माइनस करेंगे, तब 20 आएगा। तो यानी पीएआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीएआर का फॉर्मूला हो जाएगा इंसिडेंस इन पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस इन पॉपुलेशन इनटू 100। नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से समझाता हूं। देखो, एट्रीब्यूटेबल रिस्क हमें यह बता रहा था कि दारू पीने वालों में से जो 20 एक्सीडेंट हुआ है उसमें से कितना दारू की वजह से हुआ है। तो हमें समझ में आ गया था कि 20 में से 15 दारू की वजह से हुआ है, यानी 75% दारू की वजह से हुआ है। यह है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। अब हमें समझना है कि अगर पूरी जनता दारू पीना छोड़ दे तो एक्सीडेंट कितने से कम होगा। तो अगर पूरी जनता दारू पीना छोड़ देगी तो ये 20 अल्कोहलिक गायब हो जाएंगे, और अगर 20 अल्कोहलिक गायब हो गए तो जो तो अगर पूरी जनता दारू पीना छोड़ देगी तो 20 अल्कोहलिक गायब हो जाएंगे, और अगर 20 अल्कोहलिक गायब हो गए तो यानी एक्सीडेंट 20 से कम हो जा रहा है। तो वो 20 कैसे लाएंगे हम लोग? 20 लाने के लिए हम टोटल पॉपुलेशन का एक्सीडेंट जोड़ दिए, पहले 25 है, और फिर उसमें से 5 को माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 लाने के लिए हमें पहले पॉपुलेशन को जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको नॉन एक्सपोज से माइनस करना पड़ेगा, तब हमें 20 आएगा। इसीलिए पीएआर का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? पीएआर का फॉर्मूला निकल के आता है इंसिडेंस इन पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस इन पॉपुलेशन इनटू 100, ये निकल के आता है। और ये बड़ा आसान है फॉर्मूला याद करना। क्यों? देखो, इसी तरह से एट्रीब्यूटेबल रिस्क का भी फॉर्मूला हमने लिखा था, बस अंतर क्या है कि जहां जहां पॉपुलेशन है वहां वहां था एक्सपोज्ड। तो अगर हम पॉपुलेशन की जगह एक्सपोज्ड कर दें तो ये पीएआर जो है ना वो एआर बन जाएगा। पॉपुलेशन की जगह बस एक्सपोज कर देना है और पीएआर की जगह एआर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूले में दो चीज कॉमन है, दोनों में नॉन एक्सपोज्ड है, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई किया है। बस अंतर क्या है कि वहां एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज बाय एक्सपोज था, यहां पॉपुलेशन माइनस नॉन एक्सपोज बाय पॉपुलेशन है। ठीक है, तो आओ हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या निकल के आएगा। देखो, हमारे स्टडी में टोटल पॉपुलेशन है 200, तो 25 बाई 200 है, और कितने लोग नॉन दरुए हैं 100, तो 5 बाई 100 है। इसी को सॉल्व करना, मैं इसको यहां पे ऐसे लिखता हूं। देखो, टोटल पॉपुलेशन है 200, उसमें से 20 एक्सीडेंट एक तरफ हुआ, 5 दूसरे में, तो 25 एक्सीडेंट हुआ ना। इसी को कहते हैं कि ये हुआ इंसिडेंस इन पॉपुलेशन। अब इसको माइनस करना है इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज से। नॉन एक्सपोज यानी नॉन दरुए। नॉन दरुए कितने लोग हैं 100, 100 में से कितना एक्सीडेंट हुआ 5, तो 5 बाई 100 को हमने इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज की जगह लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है हमें इंसिडेंस इन पॉपुलेशन से। इंसिडेंस इन पॉपुलेशन ऊपर ही लिख लिया हमने, 25 बाई 200 है तो वो लिखेंगे, और फिर ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क।
अब आप समझ पा रहे हो कि ये कैलकुलेशन टफ है, इसलिए जनरली पीएआर का कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में नहीं आता है, लेकिन अगर वो आपके कॉलेज वाले आपको फेल करना चाहेंगे तो वो पीएआर का कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं। तो आओ, हमें पता होना चाहिए कैसे करते हैं। देखो, करने का पहला स्टेप क्या है कि 200 और 100 ऊपर में है, इनका कॉमन डिनोमिनेटर ले लो। 200 और 100 का कॉमन डिनोमिनेटर होगा 200, तो अगर 200 डिनोमिनेटर ले लिया तो इधर तो 25 रह जाएगा, 20 + 5, लेकिन इधर हम लिखेंगे 5 इंटू 2। 5 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये पुराना मैथ का ट्रिक है जो शायद आपको याद होगा कि अगर दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 200 बनाना है तो 200 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों 2 से इंटू करना पड़ेगा, तभी 2 इंटू 100 200 बन जाएगा, लेकिन ऊपर भी एक इंटू आ जाएगा 2 इंटू 5, इसलिए वो यहां पे ऊपर किया है। ठीक है, अब ये नीचे वाला 25/200 था, ये अगले स्टेप में ऊपर जाएगा, और आपको पता है नीचे से कोई ऊपर जाता है तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो इसको उल्टा पुल्टा करके लिख दो 200/25 और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो पीएआर आएगा। तो इसको सॉल्व करना उतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि 200 और 200 तो कट जाएगा, और 25 - 10 होता है 15, तो ऊपर 15 नीचे 25 इंटू 100। 15/25 इंटू 100 यानी 3/5 इंटू 100, और 3/5 इंटू 100 यानी 60%, क्योंकि 5 काटेगा 100 को 20 बार में, तो 20 इंटू 3 60%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरी जनता दारू पीना छोड़ दे, अल्कोहलिक ग्रुप ही गायब हो जाए, तो एक्सीडेंट कितने से कम होंगे? एक्सीडेंट कम हो जाएंगे 60% से। तो क्या आप तीनों बातों को अलग अलग समझ पा रहे हो? रिलेटिव रिस्क ये बताता था कि दारू पीने वालों में एक्सीडेंट 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम मोर है, दैट इज रिलेटिव रिस्क टाइम। एट्रीब्यूटेबल रिस्क बताता था कि दारू वालों में एक्सपोज्ड में 20 एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन 20 में से सिर्फ 15 दारू की वजह से हो रहे हैं, यानी सिर्फ 75% एक्सीडेंट जो अल्कोहलिक ग्रुप में हो रहे हैं वो ड्यू टू अल्कोहल है। तो ड्यू टू लगेगा तो एआर हो जाएगा। अब पीएआर ये बताता है कि अगर लोग दारू पीना छोड़ दें तो एक्सीडेंट कितने से कम हो जाएगा? 60% से कम हो जाएगा। इसलिए यहां पे डिक्रीज बाई वर्ड यूज होता है, टाइम यूज होता है रिलेटिव रिस्क में, ड्यू टू होता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क में, और डिक्रीज बाई वर्ड यूज होता है पीएआर में। इन तीनों के डिफिनेशन को मैं एक बार और लिख दे रहा हूं। रिलेटिव रिस्क का डिफिनेशन होता है इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड, इंसिडेंस को हम लोग आई से भी लिख देंगे आगे, है ना, इंसिडेंस ऑफ डिजीज, इसको हम लोग आई से लिखा करेंगे इंसिडेंस ऑफ डिजीज को, इन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज, आई से लिखेंगे, इन नॉन एक्सपोज्ड। ओके ना, सो ये हो गया फॉर्मूला रिलेटिव रिस्क का, इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस इन डिजीज इन नॉन एक्सपोज्ड। ये आरआर है ना, फुल में भी लिख सकता हूं मैं, बट ऑलरेडी आप समझ ही गए हैं इसको। एट्रीब्यूटेबल रिस्क का क्या फॉर्मूला है? इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज एआर इज ऑलवेज इन परसेंटेज, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो पीएआर का क्या फॉर्मूला हुआ? सेम फॉर्मूला है, बस एक्सपोज की जगह पॉपुलेशन कर देना। यहां पे देखो इंसिडेंस पॉपुलेशन लिख दिया, माइनस ये सेम रह गया, क्या सेम रह गया? नॉन एक्सपोज्ड, माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज सेम रह गया, और ये वाला एक्सपोज जो था उसकी जगह आ गया इंसिडेंस इन पॉपुलेशन नीचे फिर से इनटू 100। तो ये आ गया पीएआर का फॉर्मूला, इंसिडेंस इन पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज बाय इंसिडेंस ऑफ पॉपुलेशन इनटू 100। जब हमने कैलकुलेट किया था तो पहली बार हमने कैलकुलेट किया था 20 एक्सीडेंट दरुओं में, 5 नॉन दरुओं में, 4 आया था। दूसरी बात हमने ये कैलकुलेट किया कि दरुओं में 20 है, नॉन दरुओं में 5 है, तो 20 - 5 15 हो जाएगा, बाई 20 15/20 75% आ जाएगा। और पीएआर लंबा कैलकुलेशन था, करके आया था 60%। तो एक्सीडेंट 60% से कम हो जाएगा जनता में अगर लोग दारू पीना छोड़ दें। तो एक्सीडेंट जो दरुओं में हो रहा है उसमें 75% एक्सीडेंट दारू की वजह से हो रहा है, और 4 गुना ज्यादा एक्सीडेंट होता है दारू पीने वालों में। ये रिलेटिव रिस्क बताता है। तो क्या ये तीनों चीजें क्लियर हुई है मेरी दोस्त आपको? आई होप हो गया होगा। दिखाना एक बार, शायद लॉक हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमने अपने सेशन में कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल और आरसीटी के सारे स्टेप्स पढ़े।
कोहॉर्ट स्टडी को डिटेल एग्जाम्पल से पढ़ा, दो दो एग्जाम्पल लेके समझा एट्रीब्यूटेबल रिस्क को, और इसी तरह से आपको एग्जाम में कोहॉर्ट स्टडी पूछने का 20 नंबर का क्वेश्चन आता है कोहॉर्ट स्टडी का कई बार। तो आपको ये एग्जाम्पल अल्कोहलिक एक्सीडेंट का जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है डेटा के साथ, अगर ये आपने लिख दिया तो 20 में से 15-17 नंबर तो आ ही जाएंगे। 3 इसलिए कटेंगे क्योंकि पीएसएम के टीचर पता नहीं क्यों फुल नंबर देते नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है अगर कोई टीचर सुन रहे हो तो यार ज्यादा से ज्यादा नंबर दे दो, तुम्हारा क्या जा रहा है ना। उससे उनको लगता है कि हम ज्यादा दे देंगे तो बच्चा फिर इंप्रूव नहीं करेगा, लेकिन कुछ शाबाशी देंगे तभी तो बच्चा इंप्रूव करेगा, है ना। एनीवे चलो, तो मेरा बस कहना यह है कि कोहॉर्ट की पूरी कहानी लिखना, जब भी कोहॉर्ट पे सवाल आए तो पहले उसके 5 स्टेप लिखना जो हमने पढ़ा, है ना। क्या क्या था 5 स्टेप, एक रिवीजन कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या था कि हमें स्टडी पॉपुलेशन चुनना है। दूसरा क्या था कि उसमें हमें इन्यूमरेट करना है, पूछना है कि कितने लोग एक्सपोजर हैं, कितने लोग एक्सपोजर की हिस्ट्री लेनी, एक्सपोजर के बारे में पूछना है कि कारण किसमें किसमें है। तीसरा स्टेप क्या था, कारण पूछने के बाद जिनमें कारण नहीं है उनको कंपैरिजन ग्रुप बना देना है, कंट्रोल ग्रुप बना देना है। फिर चौथा स्टेप था फॉलो अप करना, और पांचवा था डेटा एनालिसिस करना, जो हमने डिटेल में सीख लिया। तो कोहॉर्ट भी सीखा, फ्रेमिंगम भी सीखा, और डेटा आरआर एआर पीएआर भी सीखा। ये सेशन बड़े काम का है क्योंकि आरआर एआर पीएआर के फॉर्मूला समझना आसान काम नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो इस पार्ट से तो आप पूछें। पीएआर नहीं समझा सुतापा ने, कोई बात नहीं मेरे भाई, बनता है आपका। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका बिहेवियर कि आप जब तक चीजों को नहीं समझ रहे हो आप उसको पूछ रहे हो बार बार। यही साइन है एक अच्छे स्टूडेंट की। ये बात अब्दुल कलाम आजाद ने भी कहा था कि फर्स्ट साइन ऑफ स्टूडेंट इज स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन। तो आपने ये सवाल पूछ के अब्दुल कलाम आजाद की आत्मा को भी शांति दिया है, वेरी गुड। आओ एक नए एग्जाम्पल से पीएआर को समझते हैं। क्या एग्जाम्पल किया जाए? इस बार हम लोग एग्जाम्पल करते हैं सिंपल, जो किताबों का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है जिससे आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। सुट्टा से होगा कैंसर। तो एक ग्रुप है जिसमें स्मोकिंग है, स्मोकर रहते हैं या स्मोकिंग प्रेजेंट है, स्मोकर है, इसमें आपने ले लिया 100 लोगों को। और दूसरा ग्रुप है नॉन स्मोकर का जो सुट्टा नहीं पीते हैं, इसमें भी 100 लोग हैं। अब इन दोनों ग्रुप को आपने 1 साल तक फॉलो अप किया। 1 साल नहीं, 10 साल तक फॉलो अप किया कि देखिए 10 साल में क्या क्या अंतर आता है। तो 10 साल में मान लीजिए कि जो स्मोकर ग्रुप के 100 लोग थे उसमें से 10 को निकल आता है कैंसर, और जो नहीं सुट्टा पी रहे थे इसमें 2 को निकल आता है कैंसर। जाहिर सी बात है कैंसर के अलावा और भी चीज आप देख सकते हैं, जैसे कितनों को गैस हुआ, कितना का कफ हुआ, कितने को एलएफटी खराब हो गया, लंग फंक्शन टेस्ट खराब हो गया। तो कई सारी चीज हमें हमेशा पता लगती है, लेकिन अभी पीएआर समझने के लिए हम लोग सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, कैंसर के केस पर। 10 और 2 कैंसर हुआ। तो पीएआर की बात अगर हम करें तो पीएआर हमें यह बताता है कि अगर हमारी स्टडी में सब लोग सुट्टा पीना छोड़ दें तो कैंसर कितने परसेंट से कम हो जाएगा। तो देखो अभी टोटल कितने लोग सुट्टा से कैंसर बन गया, कितने लोगों में? टोटल जो कैंसर बना है अभी वो 12 लोगों में बना है। टोटल 10 और 2 12 में कैंसर बना है। अब अगर सब लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो कैंसर कितने से कम होगा? सब लोग सुट्टा पीना छोड़ दिए तो ये पूरे 10 के 10 लोग गायब हो गए। तो अगर सब लोग सुट्टा पीना छोड़ देंगे तो कैंसर 10 से कम हो जाएगा। अब ये 10 आया कैसे? 10 आने के लिए हमने पहले पूरे केस जोड़े थे, फिर उसमें से 2 माइनस किया था। 12 से 2 घटाएंगे तभी 10 आएगा। और 12 क्या है? 12 है पूरे पॉपुलेशन में होने वाला कैंसर। इससे जब हम 2 को माइनस कर देंगे, 2 क्या है? उन लोगों में कैंसर जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं। तो अगर हम पूरी जनता में से सिगरेट को हटा दें तो कैंसर 10 कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे आया 10? पूरी जनता को पहले लिया, फिर उसमें से 2 को माइनस किया, नॉन एक्सपोज्ड को माइनस किया। पूरी जनता में 12 था, जो नहीं पी रहे थे सुट्टा उसमें 2 था,
तो 12 से 2 को घटा के ही तो 10 आएगा। तो यानी पीएआर का क्या फॉर्मूला हो गया? पीएआर का फॉर्मूला हो गया कि पॉपुलेशन में से हमें नॉन एक्सपोज्ड को माइनस करना है और फिर हम इसको इंसिडेंस इन पॉपुलेशन लिख करके इंटू 100 करके कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि अगर सिगरेट पीना पूरा खत्म हो जाएगा, स्मोकर पूरे गायब हो जाएंगे, तो पूरी जनता में कैंसर कितना कम होगा। ठीक है, आओ कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि ये इतना सिंपल नहीं है 12-2, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर अलग अलग है। 12 के साथ डिनोमिनेटर है 200 लोग और 2 के साथ डिनोमिनेटर है केवल 100 लोग। तो ये डिनोमिनेटर अलग होने के चलते इतना सिंपल कैलकुलेशन करके 10 नहीं आने वाला है कि 10/12 कर लो, ऐसा नहीं होगा। यहां पर कैलकुलेशन टफ होना ही है क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। ये है पूरा हमारा मैथ वाला पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे तब पीएआर आएगा। लेकिन एटलीस्ट आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, पॉपुलेशन माइनस नॉन एक्सपोज बाय पॉपुलेशन, ये है पीएआर। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया, पहले ये बताओ। ओके, जंप मत करो सुदापा, जंप मत करो, तुम पीएआर पहले समझो, फिर अपने दूसरे डाउट्स को लाओ। ऑलरेडी ये क्लास हमारी जो थी 1.5 घंटे की थी, 2.5 घंटे की हो गई है। आपके जो दूसरे डाउट्स हैं वो हम लोग अगले सेशन में लेंगे। अभी आप पीएआर समझने पे फोकस करो, है ना। तुम पीआर समझने के टाइम पे अगर अपने दूसरे डाउट पूछोगे तो तुम्हारा फोकस डाइवर्ट होगा, तो समझ में कम आएगा ना। अभी इस पे ध्यान दो पहले। इसमें क्या है कि हमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल ये रिस्क ये बताता है कि पूरी जनता से स्मोकर गायब हो जाए तो कैंसर कितना कम हो जाएगा। तो पूरी जनता का जो कैंसर था 12, उसमें से जब हम 2 हटाएंगे तभी तो 10 कैंसर आएगा जो गायब होंगे। तो इसीलिए हमने पीएआर में पॉपुलेशन माइनस नॉन एक्सपोज बाय पॉपुलेशन किया है। ये लॉजिक है पीएआर का, आई होप समझ गए होंगे। अब आओ इस कैलकुलेशन को भी करके देखते हैं, ताकि कैलकुलेशन से जो डर है वो खत्म हो जाए। ऊपर क्या है, पॉपुलेशन का इंसिडेंस है 12/200 में से, और नॉन एक्सपोज्ड में 2 केस हो रहे हैं 100 में से, डिवाइडेड बाई 12/200 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो पीएआर आएगा। सॉल्व करने के लिए ऊपर में 200 ले लो कॉमन मल्टी डिनोमिनेटर, और ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 2। क्यों 2 इंटू किया, वही बात है, 100 को 200 बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों 2 से इंटू करते हैं। अब फिर ये 12/200 ऊपर जाएगा अगले स्टेप में, तो ऊपर जाके हो जाएगा 200/12, और ये 100 तो अपनी जगह पे बना हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व करना कितना आसान है। एक तो ये 200 कट गया, 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, नीचे 12 है, 8/12 इंटू 100, 8/12 इंटू 100 यानी 2/3 इंटू 100, 2/3 इंटू 100 यानी 66%। यानी अगर पूरी जनता सिगरेट पीना छोड़ दे तो कैंसर 66% कम हो जाएगा हमारे स्टडी वाली पूरी जनता में। तो पीएआर ये बताता है कि कितने से कैंसर कम होगा अगर पूरी जनता कैंसर सुट्टा पीना छोड़ दे, तो कैंसर कितने से कम होगा, 66% से कम होगा। ठीक है, ये है पीएआर। आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर है तो सुतापा मेरे प्यारे दोस्त प्लीज एक बार और बताओ कि और एग्जाम्पल से पढ़ाऊं, मैं और पढ़ाऊंगा। इसके अलावा डॉक्टर सुतापा ने मुझसे 2-4 सवाल और पूछा है कि आरआर एआर पीएआर में से कोहॉर्ट के लिए बेस्ट कौन है। सबके अलग अलग यूज है। रिलेटिव रिस्क का यूज ये है कि ये हमें बताता है कि कौन दो चीजें आपस में कितनी जोर से जुड़ी हुई हैं। ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन के बारे में। जैसे देखो, हमारा पिछले स्टडी में क्या निकला कि एक ग्रुप में 10 कैंसर, एक ग्रुप में 2 कैंसर, यानी हमारी रिलेटिव रिस्क निकली इंसिडेंस इन एक्सपोज बाय इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज करने से रिलेटिव रिस्क निकलेगा 10/2 कैंसर, यानी 5 गुना ज्यादा। तो ये सीधी सीधी बात कर रहा है रिलेटिव रिस्क कि सुट्टा और कैंसर बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। जो सुट्टे पीते हैं उनमें कैंसर का रिस्क 5 गुना जाता है, क्योंकि ये 10/2 5 आता है। तो रिलेटिव रिस्क हमें सीधी सीधी बताता है कि कितना स्ट्रांग जुड़ा है। इसलिए रिलेटिव रिस्क को जो सारे क्लिनिक के लोग हैं, हॉस्पिटल्स के लोग हैं, वो यूज करते हैं, क्योंकि ये सीधी बात करता है, नो बकवास करता है। ये सीधे बता देता है कि कितने स्ट्रांग जुड़ा हुआ है।
तो अगर कोई पूछे बेस्ट टू टेल, बेस्ट इंडिकेटर जो ये बताएगा कि कितने स्ट्रांगली कोई चीज जुड़ा है, तो आंसर है आरआर। वो कौन सी चीज है जो दो चीज के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, कितना जुड़ाव है बताता है, वो है आरआर। बेस्ट इंडिकेटर टू टेल स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन आरआर। और इसलिए आरआर को क्लिनिशियन यूज करते हैं। तुम जाओगे, तुम्हारे सीनियर ने दारू स्मेल कर ली तो बोलेंगे कि दारू मत पियो, दारू पीने से लीवर फेल होने के चांस 8 गुना ज्यादा है। तो वो किस में बात कर रहे हैं? रिलेटिव रिस्क में, 8 गुना, टाइम, 8 टाइम। तो वो क्लिनिशियन रिलेटिव रिस्क में बात करता है। अब देखो, पता ही है तुम्हें, पब्लिक हेल्थ वाले लोग जो हैं वो सीधी बात नहीं करना चाहते हैं, घुमा के बात करते हैं। तो एआर पीएआर जो दोनों हैं वो सरकार यूज करती है, इपिडेमियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। अब इन दोनों में देखो अंतर क्या है। जो हमारा एआर है वो ये बात करेगा कि कितने परसेंट लोगों में कैंसर सुट्टे की वजह से हुआ है। जब भी एआर होगा, ड्यू टू होगा, वजह से हुआ है। और इसीलिए एआर जो है वो निगेटिव बात कर रहा है, निगेटिव वे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन पीएआर क्या बोल रहा है कि अगर सिगरेट छोड़ने लोग तो कैंसर कितना कम होगा। तो पीएआर पॉजिटिव वे में बात कर रहा है। और किस तरह से लोगों में इंफॉर्मेशन देना अच्छा होगा, निगेटिव तरीके से कि पॉजिटिव तरीके से। निगेटिव बात तो हम एक कान से सुनते हैं, उसी से इग्नोर कर देते हैं। पॉजिटिव को ही हम अपने मन में लाते हैं और उसके ऊपर सोचते हैं। तो यानी इंफॉर्मेशन जनता में देने के लिए एआर पीएआर का यूज पब्लिक हेल्थ वाले लोग करते हैं। और इन दोनों में से पीएआर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पीएआर जो है वो पॉजिटिव में बात कर रहा है। तो इन तीनों में से कौन बेटर है, ये डिपेंड करता है कि सवाल क्या पूछा गया। अगर पूछा गया कि इन तीनों में से स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कौन अच्छा बताएगा, कितना स्ट्रांगली कारण और परिणाम जुड़ा है ये बताएगा कौन, कॉज एंड इफेक्ट का एसोसिएशन कौन अच्छा बताएगा, तो वो आरआर है। लेकिन अगर ये पूछा गया कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन किससे अच्छा मिलेगा, तो आंसर है पीएआर से। समझो इसको, बात को, एआर और पीएआर को बड़ा अच्छा एग्जांपल से। अगर तुम सिगरेट के पैकेट को पलटो तो उस पर क्या लिखा होता है, एआर या पीएआर, किस में इंफॉर्मेशन मिला है? सिगरेट के पॉकेट के पीछे लिखा हुआ है कर्क रोग, धूम्रपान कर्क रोग आहे, है ना, स्मोकिंग कॉजेज सिगरेट। सो ये क्या है, स्मोकिंग कॉजेज सिगरेट जब लिखा तो ये किस टर्म में बात कर रहा है, पीएआर में या एआर में? बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, स्मोकिंग कॉजेज सिगरेट नहीं, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, सॉरी, है ना। देखो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि कैंसर इज ड्यू टू स्मोकिंग। स्मोकिंग कॉजेज सिगरेट मींस कैंसर इज ड्यू टू स्मोकिंग। तो यहां पर बात कर रही है सरकार एआर में। और क्योंकि एआर निगेटिव है, इसलिए हजारों लोग सिगरेट का पैकेट लेते हैं, उसके ऊपर ये पढ़ते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, और फिर भी सिगरेट पी लेते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं, निगेटिव बात तो वो ध्यान में लाते ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, हमारे चाचा फूके 20 साल, पापा फूके 40 साल, उनको नहीं हुआ तो हमको का घंटा होगा। निगेटिव बात इंसान सोचता ही नहीं है और वो फूकते चला जाता है। और सरकार भी यही चाहती है कि लोग खूब फूकें, ताकि सरकार को टैक्स ज्यादा से ज्यादा सिगरेट कंपनी से मिले। और तुम किसी भी सिगरेट और चिप्स की पैकेट को पलट के देख लेना, 99% केस के पीछे आईटीसी लिखा होगा। देश में जितनी भी गंद चीजें हैं वो सिर्फ एक कंपनी आईटीसी के हाथों बिक रहा है ना। पलट के देख लो, आपको पता चल जाएगा। और उसका सरकार के साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है, इसलिए वो लोग अब नए सिगरेट के पैकेट में क्या लिखवाए हैं पता है, स्मोकिंग किल यंग। हर किसी का सपना है कि बुढ़ापा ना देखे, हर कोई जवानी में मरना चाहता है। अब वो ऑफर दे रहे हैं कि सिगरेट पियो और जल्दी मर जाओ। तो रैदर देन पनिशमेंट कैंसर, अब लिखने लगे हैं स्मोकिंग किल यंग। तो अब तो वार्निंग गायब हो गई, अब तो उसमें एप्रिसिएशन हो गया। एनीवे, अगर आप बन जाओ हेल्थ मिनिस्टर और आप चाहते हो कि लोग सिगरेट छोड़ दें सच में, तो रैदर देन ये लिखना कि कैंसर इज ड्यू टू स्मोकिंग या स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, आपको ये लिखना चाहिए कि इफ यू और इफ पीपल स्टॉप स्मोकिंग, कैंसर विल डिक्रीज बाई 80%। अगर लोग सिगरेट पीना छोड़ दें या तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, तो तुम्हारे कैंसर से मरने के चांसेस 80% कम हो जाएंगे।
ये लिखा होगा ना, तो लोग ज्यादा इस पे सोचेंगे, क्योंकि इसमें उनकी बात हो रही है और पॉजिटिव बात हो रही है कि हाँ मैं बच सकता हूं, है ना। तो उस पे लोगों का सोच ज्यादा जाता है जहां पॉजिटिव है। जैसे अगर आप मुझे पतला करना चाहते हो तो दो तरीके से बोल सकते हो कि मोटे दौड़ नहीं तो फटेगा, है ना, यू विल हैव बीपी शुगर ड्यू टू नॉट रनिंग, ये ए आर है। दूसरा क्या बोलोगे, अगर दौड़ोगे तो 10 साल जवान दिखोगे, अगर दौड़ोगे तो बीपी शुगर का चांस 20% कम हो जाएगा, ये मैं सुनना चाहूंगा। तो इसीलिए पी ए आर बेटर है ए आर से। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके अलावा आपके जो भी और क्वेश्चन हैं वो मैं लिख लेता हूं, अगले सेशन में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल सुतापा ने पूछा कि मॉनिटरिंग और सर्विलेंस का डिफरेंस बताएं। ये तो मैं ऐसे ही बता देता हूं तुम्हें, कुछ भी नहीं है, बहुत ही एक सिंपल टर्म में बता रहा हूं, बाकी डिटेल में अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। मॉनिटरिंग, सर्विलेंस और एक और चीज है इवैल्यूएशन, ये भी समझ लो क्या है। बहुत ही आसान सी बात है। देखो, मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आप उसको डे टू डे देखें। जैसे मान लो आप रिलेशनशिप में हो और रोज शाम को आप जब जाते हो अपने बंदे बंदी से मिलने, तो वो आपका फोन लिया या ली और इंस्टाग्राम पे क्या क्या दिन भर किए, चैट किसको मैसेज डाले, वो चेक कर ली। तो ये है मॉनिटरिंग, डे टू डे क्या हो रहा है इसका ऑब्जर्वेशन, डे टू डे ऑब्जर्वेशन कि चल क्या रहा है, ये मॉनिटरिंग है। ठीक है। सर्विलेंस का क्या मतलब है कि आपका जो इंस्टा का पासवर्ड है वो ऑलरेडी आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास है, आपका अकाउंट उनके फोन में लॉगिन है, तो आपको शाम में आओगे तब देखने की जरूरत नहीं है कि शाम से पहले डिलीट कर दिया तो नहीं पता चलेगा। आप चू भी करोगे तो वो भी पता चल जाएगा, ये सर्विलेंस है। तो यानी सर्विलेंस हो गया क्लोज मॉनिटरिंग, और क्लोज मॉनिटरिंग के साथ साथ इसमें होता है फीडबैक कि भैया सुधार कैसे होगा तुम में, ये भी। क्योंकि जब आपका सर्विलेंस पे रखा गया है फोन, यानी आपका पासवर्ड ही जब आपके पार्टनर के पास है, तो फिर डंडे तो होंगे, डंडे तो बरसेंगे, क्योंकि जब इतना हक से पासवर्ड रखा गया है तो ये भी हक होगा कि तुमको फीडबैक देके सुधारा जाए। अब इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब होता है कंपेयरिंग इन रिजल्ट, यानी रोज रोज तो नहीं देखा जा रहा है, तुम्हारा पासवर्ड भी तुम्हारे पार्टनर के पास नहीं है, लेकिन 2-3 महीने पे एक बार जब तुम बाथरूम गए तुम्हारा फोन लिया जाएगा और पूरा 2 महीने का काला चिट्ठा खोल दिया जाएगा, और बाथरूम से निकलने के बाद तुम्हारी छरछरी लगा दी जाएगी अगर तुमने इधर उधर कांड किया होगा तो, कांडी की तरह। तो यानी इन रिजल्ट कंपेरिजन को इवैल्यूएशन कहते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन एग्जाम में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैं खुद भी इसको प्रिपेयर करके लाऊंगा एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे पढ़ाता हूं, तो इसको प्रिपेयर करके अगले सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। चलो अगली बात क्या है, कोहॉर्ट और केस कंट्रोल को एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, अगले में केस कंट्रोल समझेंगे और उनका डिफरेंस भी समझेंगे। तो वेरी गुड। कोहॉर्ट केस कंट्रोल तो आज ही मैंने लिखा था टॉपिक में, लेकिन आज हमने नहीं पूरा कर पाए क्योंकि हम लोग डिटेल में चले गए इसके कोहॉर्ट के। कोई बात नहीं, कल ही हमारा सेशन है, उसी सेशन में हम लोग कोहॉर्ट केस कंट्रोल का डिफरेंस को समझेंगे। तीसरी बात, तीसरा और कोई सवाल? फॉर्मूला अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। ब्लाइंड फोल्ड एक बच्चा है जो कह रहा है कि सर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मोटिवेट कर दो सर। भाई देखो, मोटिवेशन बहुत ही टेम्पररी चीज होता है, अभी आएगा, पॉटी में जाओगे, फाट के साथ निकल जाएगा। मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। होना किससे है, डे टू डे आप जो कर रहे हो उसी से रिजल्ट अच्छा होगा। तो मोटिवेशन का एक ही तरीका है कि अगर आप नीट की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने पूरे दिन को 4 पार्ट में बांट दो। मान लो आप सुबह 9-10 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, 9 नहीं उठ रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, तो पहले 3 घंटे को एक पीरियड दे दो, फिर दूसरे 12 से 4 यानी 1 से 4 को दूसरा 3 घंटा दे दो, फिर 1 घंटे का ब्रेक लो, और 5 से 2-3 घंटा जो भी आपका 7-8 घंटा है, 2-2 घंटे भी कर सकते हो। अगर आपको 8 घंटा दिन भर में पढ़ना है तो 2-2 में डिवाइड कर लो, अगर 12 घंटा पढ़ना है तो 3-3 में डिवाइड कर लो। लेकिन 4 पार्ट में डिवाइड करने से क्या फायदा होगा कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं 9 बजे उठेंगे, उठते ही 11 बजे हैं, और फिर खुद को गाली देना शुरू करते हैं और फिर पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। तो अगर 4 में डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे माइंड में क्लियर रहेगा कि एक ही तो ब्लॉक खत्म हुआ है, अभी 3 ब्लॉक बाकी तो है ना? तो इसलिए दिन को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर लो, 9 से 12, फिर 1 से 4, फिर इधर मान लो 2-2 घंटे कर लेते हैं, 5 से 7,
और फिर 8 से 10। और नीट की तैयारी वाले बच्चों को जो कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, फ्री हैं, उनको करना क्या चाहिए कि सुबह का टाइम 9 से 4 का टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ नीट का पीवाईक्यू ईयर वाइज बनाना चाहिए और एक्सप्लेनेशन उनका पढ़ना चाहिए। इस दौरान आपको कोई भी ऐप नहीं देखना चाहिए, कोई भी नोट्स नहीं खोलने चाहिए। अगर ऐप से क्वेश्चन बना रहे हो तो ऐप तो देखोगे ही, लेकिन दूसरा वीडियो नहीं खोलना चाहिए और नोट्स नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वीडियो और नोट्स जो है एक बार आपने खोला तो फिर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, वीडियो नोट्स पे चले जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में गलती होती है तो अंदर के हीरो को चोट लगती है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन से भाग के पढ़ाई पे चले जाते हैं। तो पहला काम तो यह है कि शुरू का टाइम क्वेश्चन को दो। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे आपका रियल एग्जाम भी होगा। अब अगर आप रोज रोज ये काम करोगे इस टाइम पे, तो एग्जाम वाले दिन आप फ्लो में आओगे और जरूर कर जाओगे, है ना। माइकल फ्लैप जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट है, उससे पूछा गया कि इतना ज्यादा स्विमिंग में गोल्ड मेडल कैसे लिया, तो यही बोला था कि रोज मैं इसी टाइम पे प्रैक्टिस करता था, इसलिए मेरे लिए ये ओलंपिक का प्रेशर ही नहीं था, मैं तुरंत तैर गया। तो उसी तरह से आप भी एग्जाम में फटाफट कर जाओगे, क्योंकि आप रोज ऑब्जेक्टिव बना रहे हो। फिर शाम का जो टाइम है वो आप थ्योरी को दो, और अगर मन लग रहा है तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, मन नहीं लग रहा है तो 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, ताकि 2 सब्जेक्ट पढ़ने से स्पीड भी बढ़ती है और इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो आपका फोकस अगर इस बात पर है कि आज का दिन मैंने यूज किया कि नहीं, और आज के दिन में अगर आपने 1 घंटा भी पढ़ा, 10 घंटे में से सोचा था कि 10 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ा आपने 1 घंटा, तो आप एप्रिशिएट करोगे खुद को या गाली दोगे? ज्यादातर बच्चे गाली देते हैं, और गाली देने के चलते फिर अगला दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड बहाना बना लेगा, वो बैठेगा ही नहीं। तो अगर आपने 1 घंटे भी पढ़े हैं 10 में से, तो खुद को एप्रिशिएट जरूर करो कि वाह लौंडा, 1 घंटा तो कम से कम बम चिपक पाया। एप्रिशिएशन करोगे तो अगले दिन वो 1 से बढ़ेगा 1.5, 2 और बढ़ते जाएगा। तो मोटिवेट होने का तरीका बस ये है कि आज पे ध्यान दो, रिजल्ट को सोचना छोड़ो। तो उससे आपका प्रेशर कम होगा और आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और दूसरा बात क्या है कि धीरे धीरे जब आप रोज पढ़ोगे ना, तो आपके स्कोर बढ़ेंगे, और अगर आप कॉलेज हो में हो, प्रॉफ में हो, तो आपको एप्रिशिएशन मिलेगा अपने बैचमेट्स में, अपोजिट सेक्स आप पे ज्यादा ध्यान देगा, टीचर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो वो एप्रिशिएशन और मार्क्स बढ़ने के चलते फिर हमारी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो मोटिवेशन का एक ही तरीका है, डेली काम सही से करे और डेली पे ध्यान दे। तो डेली पे ध्यान देने से थोड़े 4-5 दिन मेहनत लगती है, फिर आपकी गाड़ी स्पीड में आ जाती है और आप अपने आप ही मोटिवेटेड रहते हो। तो आई थिंक ये मोटिवेशन अच्छा है, और आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आपने अपना ध्यान दिन पे दिया और दिन को ऐसे डिवाइड करके पूरे मन से पढ़ाई किया, तो कुछ भी हो सकता है। अभी नीट एग्जाम में बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छा स्कोर लाओगे। कुछ भी डाउट लगे, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सीधे मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर मुझे मेडेड के टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम संकल्प है, और भी ग्रुप हैं, जैसे थर्ड प्रॉफ वालों के लिए सुश्रुता बैच है, उसमें कनेक्ट कर सकते हो। फिर और भी बैच है, उसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, अपनी जो भी मन की बातें कहिए। कोई भी शंका लघु शंका हो, कान में नहीं, व्हाट्सएप पे करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। हasta la vista, दस विदानिया। जो भी कोई भी आपको कभी भी दिक्कत लगे लाइफ में, तो ये याद रखना कि सारी दिक्कत टेम्पररी है। आप खुद पे काम करते रहो, थोड़े दिन में ही वो सारी दिक्कत सॉल्व करने के लायक आप बन जाओगे, ठीक है। कोई टेंशन ना लो, सब टेम्पररी है, जर्नी को एंजॉय करो। लव यू ऑल, मिलते हैं। ब्लाइंड फोल्ड डॉक्टर ने कहा है कि लव यू सर, इतना बिजी होने के बाद भी मुझे इतना समझाया, थैंक यू, मैं नीट निकाल के मिलूंगा। वाह क्या बात है, तुमने मुझे मोटिवेट कर दिया। बहुत बढ़िया भाई, यही पॉजिटिव एटीट्यूड मैं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा छुड़ा दो, ठीक है। चलो मिलते हैं बिड़ू, और अगली बार जो भी कोई डाउट होगा आप आगे फिर पूछिएगा, मैं आपको जरूर सॉल्व करूंगा। और वो जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो भी हम लोग कल सेशन लेंगे। 6 बजे से भी सेशन है, एक और सेशन है शाम में भी 8 बजे से। दोनों सेशन में आपके कई सारे डाउट्स और चीजों को हम लोग कवर करेंगे, और कई सारे नए टॉपिक्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। बाय बाय।